फोन लगातार प्रैक्टिस किया जा रहा है। अच्छा अच्छा ठीक है, आप ट्राई ठीक है, आप ट्राई करते रहिए। ठीक। जी Okay, so ma'am, I am beginning the session with your permission. Yeah. you can start. Okay, thank you, ma'am. Anamika, ma'am, I have made you the presenter. So I welcome all the speakers and panelists in the panel and all the attendees who have joined from different parts of country in the second day of international webinar on mental health and COVID-19 during and post-pandemic era. We are overwhelmed with the response we received so far, and yesterday more than 600 attendance was there, and I'm very much sure that you all could get benefited the lectures. And today we have two speakers, one from Sri Lanka, another from Dubai, and then we'll start the valedictory session. In the valedictory session, we have with us two eminent speakers, Professor P.K. Rai and Professor R.N. Singh sir, who have already joined in the panel. So before I start the session, I start introducing our first speaker, Dr. Anamika Mishra. Let me tell you again that after the completion of today's session, I will share a link possibly by today evening or maybe by tomorrow morning, Google Form link for your feedback. Please refer your email that we had sent earlier. Only one mail we have sent to all the attendees. Please go through carefully what all it is required in order to fill the feedback form. And please remember, you will have 24 hours for the submission. And I request all the attendees who are listening that please submit once. Please do not go for 2 or 3 responses. It is my humble request to all of you. Once you are very much sure that you have entered all the details, then only submit. Right? You need not hurry. So again, I welcome you all. And today, let me. There is some rush. Okay. Just a second. Okay, so I take this opportunity to welcome our today's speaker, Dr. Anamika Mishra. She is currently serving as program coordinator and lecturer of social work at Higher Colleges of Technology, a federal government university at the United Arab Emirates. She is trained in clinical psychology and psychiatric social work from TIS Mumbai. She has over 16 years of experience as a counseling psychologist, corporate trainer, researcher, and educator, having worked with International Labour Organization, A.F. Ferguson and Company, British Petroleum, Middlesex University, University of Dubai, and various medical centers in Dubai. She is currently a consultant for the Ministry of Happiness in the UAE and serves as a board member for schools and CSR initiatives. Her areas of emphasis are preventive mental health care, happiness at work, and corporate social responsibility. She will be talking on COVID-19, an epidemic or epiphany. I am repeating her topic for today, COVID-19, an epidemic or epiphany. So, Dr. Anamika ma'am, we welcome you on behalf of the organizing committee, our Honorable Vice Chancellor, Professor T.N. Singh sir, and Mahatma Gandhi Kashi Vidyapth, Varanasi, India, and on behalf of all the attendees, we welcome you, and over to you, ma'am, for your presentation. Thank you so much. Hear me?
Am I audible? Can you hear me? Okay, all right. I see Dr. Tusharika nodding ahead, so I'm going to take that as a yes. Okay. Yes. Right, so I tried to share my screen. Let me know if you could see it, and then we'll take it from there. Is my screen visible? Yes. It is appearing, but it is visible. Okay, all right. So I would like to start with thanking all of you, Dr. Rashmi, Dr. Durgesh, for giving me this opportunity to share my thoughts with you guys. Thank you, Durgesh, for a very kind introduction. I would like to start because I see we have only 25 minutes. Okay, so today I would be speaking about COVID-19, whether it's an epidemic or an epiphany, and I will explain the choice of words as we go forward. Let's have a look at what happened to the world recently. On 11th of February 2020, World Health Organization announced name of a new coronavirus disease, COVID-19, though the world was seeing its impact right from December 2019. The word changed after that. I've taken a choice of some images to show you how right from the virtual communication to the way the public signage was being shown to the way people were going out in public changed because of this virus. Sorry, for a minute. Hi, Anjana, I'll call you back in a minute, okay? I'm in the middle of a meeting. Yeah, let me get back to you. Thanks. Very good. Work. Yep. Right. So to help us understand what really happened because of coronavirus, I decided to put that in the perspective of Bronfenbrenner's ecological system model. Just to give a brief introduction to this. Bronfenbrenner was an American psychologist, and he offered this framework to help us understand how an individual interacts with various systems around it. Right from microsystem, which is immediate environment such as family, to the chronosystem, which is talking about. Sorry? I'm so sorry. Please. Oh, okay. I thought you were saying something to me. All right. So right from the microsystem to the chronosystem, understanding how the individual sits in an environment helps us understand the impact of coronavirus better. What happens at the microsystem level? So I've tried to analyze the biopsychosocial well-being of an individual. Let's take example of infected people who already contracted coronavirus. Of course, at biological level, there's real suffering. We have seen images of people who have been in ventilator. We have seen how they go through multiple health issues, especially if they have underlying health conditions leading to hospitalization and in very unfortunate events, even death. At psychological level, we see mostly negative impacts. We can see intense anxiety, fear of dying, depression, hopelessness, could be very commonly seen in people who are infected with coronavirus. At positive level, though, we also see a certain sense of resilience, a hope to fight back. And in psychological terms, you can understand it by looking at how the fight and flight responses get activated when people are under stressful situation. Having worked with mental health issues being faced by coronavirus patients, I saw a lot of them had very unique coping mechanisms emerging, things that really help them combat the virus well. The crisis management strategies that a lot of people put in place, such as ensuring that their family is taken care of, changing their wills, etc., was also seen. So all this could be looked upon as healthy coping mechanisms for people who were infected with coronavirus. At psychological level, it was seen negatively that there was intense anxiety, fear of dying, depression, and hopelessness, whereas in positive, it was resilience, coping mechanism, and crisis management. Looking at the people who were able to combat coronavirus, cured, we saw at biological level, there were various precautions they were told to take because the long-term impact of this virus is still unknown.
There are people who are saying that after they recovered from the coronavirus, they could still feel that their lungs were working only at 60 to 70% of their capacity. So those kind of researches are ongoing, and eventually we'll get to know what is the long-term impact. So that's the biological level impact of people who have been cured. At a positive level, we see that people have made huge lifestyle changes, such as adapting good body weight, they sometimes get to know about the underlying health conditions, so they begin to take care of that. There's a change in life-threatening habits such as stress, smoking, etc. So that really is a positive side of people who were cured. At the psychological side, the negative impacts can include post-traumatic stress disorder, which is seen very commonly in patients who are suffering from chronic illnesses. Geriatric care examples also show that there is a phobic anxiety disorder called thanatophobia, which is seen commonly in people who have survived cancer or other life-threatening diseases. So similar kind of situation is being seen with patients who recovered from coronavirus. We also see a lot of somatic symptoms disorder. Even though they have recovered, they still are showing symptoms of extreme anxiety. They are sometimes showing somatic symptoms such as body ache, nausea, migraines. So though there is no underlying health factor which one can identify because multiple tests are being conducted, but still the patients are showing the psychosomatic symptoms that could be looked upon as a negative impact. The positive impact of coronavirus at the psychological level has been a sense of empowerment, a sense of self-awareness, increased resilience and coping mechanisms, and basically feeling a bit more confident about the future because they think that they have combated something really, really serious, and that instills their faith in the future. People have also been reported refocusing on life's more important aspects. We have ongoing research on this aspect of coronavirus, but because the research is still under process, I'm not allowed to share the results. So anecdotally, I'm telling you that around 80% of people who recovered from coronavirus have been showing symptoms similar to post-traumatic stress disorder and phobic anxiety disorder, wherein around 20% of the patients show the positive impact where they're feeling more confident and refocusing their life on more important aspects. All right. What about people who are at high risk? When I say high risk, I would like to touch upon what some of the speakers were saying yesterday, especially Dr. Tusharika's reference to ageism. The people who are above 60 are considered at high risk. People with underlying health condition are considered high risk. Pregnant women are considered high risk. People with mental illnesses are also considered at high risk because it's difficult for them to understand the concept of social distancing and enhanced hygiene. So looking at this particular population, we would say that of course, they have to live with various precautions at the biological level, which can itself has a psychological impact on them, such as they might not be allowed to go out for walks. They might be not allowed to practice certain things that were practiced in the past, such as socializing with their friends, post-retirement, etc. At psychological level, research has shown that novel exotic threats, and we have seen this with Ebola and MERS and similar kind of exotic illnesses. This basically raises the anxiety level higher than the more familiar illnesses that we might have. Now, one of my colleagues, who's a virologist, says that more people die every year because of common flu than they have currently died from coronavirus. And I'm not saying that coronavirus is any less a threat, but what I'm saying is our reactions are a bit more heightened to new illnesses. And psychological researchers tell us that this reaction could be mainly because of what happens in our amygdala. The research is suggesting that amygdala has a role in detecting novelty as well as processing fear. In fact, in one recent study, done by Dr. Baldeston in University of Wisconsin, he found that when the participants were shown unfamiliar flowers right after seeing pictures of snakes,
they responded negatively with fear and anxiety towards the pictures of those flowers. So that's what perhaps is happening with the situation where people who are at a high risk, even though they haven't contracted the virus per se, but they are showing a range of negative psychological symptoms, as is being seen with people who have contracted coronavirus or have been cured from coronavirus. So that's perhaps because of our, that's what our understanding of psychological health tells us. What about the general population? People in general, all over the world, have a perceived threat or perceived risk factor towards coronavirus. Now, studies show that even though there might be a lower percentage of perceived threat, but the very fact that this is something new, that this is something they have never come in contact before, increases the experienced danger or experienced threat towards the virus. Okay, so perceived threat is an individual cognitive assessment of the likelihood a danger will affect them and how bad it would be if it does. So the fear factor, as it is called in common language. Perception of threat, accurate or not, are key to predicting adaptive health responses, also known as AHRs, responses that basically help protect the self from danger. Now, this is a good thing, actually, because these health responses kind of keep us safe. But what happens when they are taken out of the context or when they are blown out of proportion? The same health responses become negative for us. So it's like constantly living in that fight and flight response where you are secreting high levels of cortisols and other hormones, which actually put you at a high risk of other diseases, right? So despite some early debate, most evidence supports that claims that threat messages increase perceived threat and perceived threat increases the AHRs. And what happens when non-constructive and disruptive social and personal behaviors result as form of AHR? They increase our risk for mental illnesses. Like, for instance, excessive hand washing or sanitizing during COVID-19 can eventually convert into a full-blown case of obsessive compulsive disorder, right? At the same time, there are people who are underreacting to the familiar threats. As I said earlier, there's like if I take the US data, almost 20% of population per year in US gets sick with influenza, common flu, right? And a lot of people die because of that. But yet people feel less urgency towards getting a vaccine for seasonal flu. In fact, only 46% people take vaccines for seasonal flu, right? So this kind of tells us that as time passes, people kind of get used to that level of threat and it helps them cope up with the stresses better. I'm not saying not getting vaccines is a good thing, but at least that sense of urgency that people are feeling right now could be reduced eventually, as we can foresee, as they get more and more familiar with this new COVID-19 virus. Okay. I've just taken some data from UAE. This was a research done by YouGov. And it shows that how in the UAE, if you could see that around April, the anxiety was high, and then began to drop down as we entered May and almost entering like in the middle of June now. So you can see that the fear of catching the virus that people had and which resulted in higher anxiety is reducing as the time passes. It kind of proves that people are getting more familiar with the virus and therefore getting less impacted by it. Similarly, if you see the behavior changes that happens when we get more familiar with how to cope up with the virus, how to keep ourselves safe, could be seen by looking at the percentages of people wearing a mask when they're in public places. You can see that in early March, only 40% of population was wearing masks in public places, because there was a lot of controversy whether it's useful or not. But if you look at late May numbers, almost 80% of the population is complying with wearing masks in the public places. Another reason behind this is also higher governmental push, where government is making it almost compulsory to wear masks in public places. Right. Moving on. So an ecosystem. So going back to the theory, the systems theory that we started with, if we were to look at what happens outside this familial environment, outside this known environment to people, so at the larger level, meso and exosystem level, people are being impacted by the system.
There are laborers who are walking miles in excruciating conditions, and unfortunately, some of them have even lost their lives. And yesterday, I think Dr. Shraddha and Dr. Panchgopal both talked about this. Now, there's an increased rate of suicide and homicide. Again, we don't have exact data right now, but definitely the World Health Organization as well as the local agencies working here in the UAE have reported high cases of suicidal ideations, suicidal tendencies. Also, there has been an increased rate in homicidal crime world over. There's increased rate in domestic violence. Now, what happened during the coronavirus was a lot of families were forced to stay in-house, which is great for families who are well-balanced and well-adjusted. But what happens to the broken families? In broken families, people cope up with the situation in their life by actually maintaining that social distance, by staying out of that context as much as possible, both women and children, and in very few cases, older people, because they don't want to go through those, experiences. But because of coronavirus, they were forced to stay closed inside the house, thereby increasing their risk of exposure to violence multiple times. And we can actually look at the data from various social work foundations saying that there has been a definite increase in the domestic violence cases. Now, let me contextualize it to the UAE. If you look at the UAE, there are only 37,000, 38,000 cases right now, but we also have to bear in mind that UAE is a much smaller population than the rest of the world. What happens because of that? As soon as the coronavirus threat started in the UAE, there was a sanitization drive which was implied on the country. In better words, it is basically a lockdown. And what happened because of lockdown? The consumer base of companies who are running in UAE depleted completely. All right, 70% of the UAE companies right now, as per a research conducted by Dubai Chamber of Commerce, say that they are expecting to go out of the business. Okay. And 3/4 of those companies are basically travel and tourism companies, as one can guess. Now, UAE is a unique country. 80% of the population in the UAE is expatriate population. Now, if we look at that population, the stakes for the country gets even higher, because if the companies are closing down, it will have a direct impact on the residents who will no longer have work. Right? Once the work permits expires, they would return back to their home countries. And we are looking at almost 10% contraction of population this year, which means companies who are already doing poorly because of coronavirus lockdown and lower consumer rate will have a further negative impact when the 10% of population, the consumer base, goes back to their home country. Right? So it's not a very pleasant scenario for the companies, right? And this is how it's impacting the migrant laborers in the UAE, right? Also known as blue-collared expatriate workers. You can see the accommodation, more than 7, 8, 10 people crammed up in a small room in very unhygienic conditions, right? More than 200,000 Indians who are living in the UAE have registered with the Consulate General of India in UAE to request a flight back home. 1/4 of these people are those who have lost their job because of the situation I was discussing earlier, but there are also people who were here on tourist visas, medical emergencies, students. A lot of students are stuck here and they want to go back home. So, there is definitely a sense of paranoia. There's a sense of anxiety. The parents back home are anxious. I have friends whose kids are stuck here or in US or UK, and they're not able to reach their parents. And it's creating a very, very stressful situation for the whole family, hence the psychological impact. So we need to put this also in the context of what happens to these blue-collared workers here. We see that in GCC countries, in Gulf countries, there are almost 23 million migrant workers, right? And they live in deplorable conditions here. They do not get good hygiene facilities. They are housed in camps with 6 to 12 people each in a room. Of course, no hygiene guidelines are being followed, no social distancing is being followed. So basically, they're put at a higher risk of contracting coronavirus, and therefore higher anxiety levels, higher fears, all those psychological factors I've been discussing with you guys. And
despite that, despite being at a higher risk of psychological illness and other social impacts, financial impacts, they get the least amount of care. These are the people who do not have insurance. These are the people who do not have resources, both actual and perceived resources, to reach out for help, for counseling, for helplines given by the government. And that kind of makes the situation worse. What adds to the whole the whole situation is that they are away from their family. They're usually here by themselves, but they do not have the usual buffer of support system which people back home have in terms of having a family. So they perceive that they're really far away, and if something happens to them over here, they're going to die alone. And I have been working with Indian consulate, and the kind of things I've heard over the phone are really heartbreaking, the way these people are suffering. So that's the actual on-ground psychological impact of the coronavirus. Okay. Solitary confinement, as you might already know, is considered to be the worst form of punishment. In fact, United Nations in 2011 passed a decree saying that this kind of punishment should be, stopped or condemned it, saying that only in exceptional, extreme circumstances it should be used, such as with serial killers or those kind of scenarios where people were actually proved to be psychopaths. But because of coronavirus, solitary confinement has become something that happens in your day-to-day life. The isolation, the fear, the uncertainty that people are feeling is mainly because of the sense of isolation and being forced to be confined within their own homes. Now, in UAE, there are a lot of people who stay here by themselves, away from their families. Even if we take families, it's almost like a nuclear family system. We do not have that kind of support, the social support, the network with the neighbors, network with extended family as you would have in India. So that is actually leading to a very disastrous situation. In fact, a recent report by World Health Organization on Middle East says the isolation, the fear, the uncertainty, the economic turmoil, they're all going to cause extreme psychological distress in the country. People are working from home. There's a constant fear of missing out. I know I've been working for more than 12 hours a day during extreme lockdown, trying to finish the work, helping my children with their education, and doing humanitarian work with the laborers and with Indian consulate. So that constant anxiety, the stress builds up. Work-life balance becomes more difficult because of people being confined at home. So that becomes very, very challenging, and that has its own psychological impact where you don't feel fulfilled because you always feel that you're kind of short of performing somewhere. Lack of adequate mental health care. I know a lot of clients who actually require one-to-one intense counseling, but are not able to do so because of the situation created by coronavirus. So those people who are actually mentally ill are deteriorating. I know of children, we call them children of determination here. So basically children who are living with physical and mental disabilities. They found coronavirus restrictions even more difficult. I was one day desperately called by a mother saying, my daughter is banging her head against the wall. This child, a 10-year-old, is suffering from autism spectrum disorder. And she just wanted to go out, and the mother was saying, well, we cannot because there is an illness outside, and she couldn't comprehend it. And that caused extreme stress in the child. So those kind of cases are being reported on a day-to-day basis because the adequate mental health care which they were able to get before the coronavirus struck is not available right now. What happens to the healthcare providers? Reuters last week reported, they interviewed basically the doctors and nurses in the United States. And a lot of these people were showing psychological symptoms of panic, anxiety, grief, numbness, irritability, insomnia, and nightmares. A case building up of anxiety disorders, apparently. What can be done? The epiphany, right? Sometimes events happen and they are like a wake-up call. They tell us that something needs to be done in a different way.
Yes, Durgesh, I'll be summarizing now. That's what I'm doing. Last few slides. New normal is emerging, right? We are becoming aware of the gaps in a society, whether it's a tech dependency. From both the sides, people who are overly tech dependent perhaps are finding the situation to be much easier because maybe they are digital natives, they could adapt to the whole situation really well. But some people are finding it very, very difficult. Tech dependency is being reported to leading migraines, low blood pressure, high blood pressure, changes in metabolic levels. So that kind of research is pending. It is a wake-up call to say, well, this is a new normal. So let's get our heads together, and start researching on the impact. Lockdown has its ripple effect, and I think I've talked enough earlier on this. Working from home, if you still have a job, that is something that was under research. Actually, if you might be following that in Switzerland, there was a decree, they had some kind of discussion happening on basic minimum pay. And actually people voted against it. They said that's not what they want. But these are things that were under research. 4-day work week was under research. Working from home was under research. And suddenly we just plunged into it and started doing it. So perhaps the new normal is telling us to carry on those researches and come up with results as soon as possible to understand what's happening and why can't we work at home? Is it just a desire to control, or it's more than that? Because researchers are telling us that there's a high productivity working from home. The virtual learning platform, and I think a lot of us are into higher education and we understand the impact of it. The digital fatigue it's causing, both in the teachers and in the students, is something which is of high concern, especially when we're talking about younger children. Digital poverty, I've shared the image of a girl from Kerala who had to sit on a rooftop to get signals so that she can attend online classes. These are wake-up calls. The gender gap. I have students who tell me, well, miss, I wasn't able to attend the class because I had to take care of my children. Well, what's your husband doing? Well, they don't. That's not their job. It's not their job to take care of the children. So women, student of mine, have been going through a really difficult time trying to maintain that work-life balance, taking care of the children, taking care of the older people in the family, providing for everyone and studying. Okay, so that's another thing that we need to wake up to. Consumer economy. A lot of research is going on. Can we use the spaces? Like, for instance, can one brick and mortar university cater to more than what they are doing right now by perhaps having more kind of activities happening within the premise of the university, such as virtual learning, professional training, corporate training, and so on and so forth. There has been a tendency to hoard in people, right? It has been seen that people have hoarded right from medical supplies to food items and so on and so forth. So that's something that needs to be studied. Aviation, hospitality, and luxury industries are going downhill. So that's another new normal that's emerging, that we need to do something about these industries and the way they function. And last thing over here is we see that the Mother Earth is healing. There's a green recovery happening. So perhaps the wake-up call is also about seeing how we can reduce the pollution level worldwide and maintain the kind of. In my session today, I would like to talk about the psychological responses that we might have. The first thing is communication, using more infographics, telling people exactly how to ritualize these behaviors, such as hand washing, as was done again during the time of Ebola crisis and MERS crisis. Then messages could be more creative, more user-friendly, as we've seen. Actually, I was having a look at the Kerala government infographics and some videos they've made. So that kind of approach in regional language would be more interesting for people to follow. Keep it simple, right? Put things in perspective. So numbers are nothing in absolute. When we say in the cases such as UAE that there are 38,000 cases, it means nothing. But if we put it in terms of percentages, it means something. So basically less than 1% population has contracted coronavirus. So that kind of understanding, even in an Indian population, might be very useful. Last
Lastly, what are things that we need to do as psychologists, as educators and trainers? We need a much higher level of psychological first aid training, which I don't see in many curriculums across the country. Training in brief counseling is another call for the hour. Virtual counseling methods, platforms which can be used for virtual counseling would be, and the training for that would be something that we need to work towards. Practice resources need to be very easily provided, perhaps something similar to what happens in UK. The National Health System has all these resources available for mental health professionals at one place. That would be a good approach. Advocacy for insurance or mental health services is extremely important. I cannot emphasize enough on this. Workplace mental health initiatives, something which is more than just lip service. Having specific initiatives for people who are on verge of losing jobs or are made redundant. Hotlines for domestic violence on women and children needs to be there and working functionally. And of course, change in the mindset of migrant workers that they are enough by themselves in their own environment. They do not really need to work so many kilometers away from home. So that's my take on coronavirus. With this, I would like to end today's presentation. I was seeing some questions asked. I have included all the references here. It would be perhaps useful for you to go and have a look at these resources to get answers to the questions. Any questions so far? Thank you so much, ma'am, for the very comprehensive presentation. I must say, you have included almost all the aspects that we psychologists can look for and extend our services. So yes, we have so many questions, but because of the time shortage, we can take 2-3, and then the very first question I could see here that as we all know, I think I'm audible to you, ma'am. Yes. Okay. As we all know that the people who are in quarantine are stressed, but I want to know about the corona warriors like doctors, nurses, policemen, and everyone as such who have been working overtime and are not able to get a required sleep and proper rest. What should people do to relieve the mental stress? Well, the part of training of being a medical professional is to become more resilient to such challenges. Medical professionals are known to work beyond hours as part of their duty. So thankfully, they have a bit of training in that area. But self-care is extremely important for any health professional, mental or physical. So I would say that perhaps having a clear emphasis on maintaining at least 4 to 5 hours of sleep on a day-to-day basis, having your social support going on, seeking counseling if you are feeling the impact of burnout, as many health professionals are feeling right now. And we as society have to respond to this more, I would say, more honestly, because I see a lot of hypocrisy here, because on one hand, we are clapping and doing a lot of celebrations for health professionals. But on the other hand, my sister is a doctor, and she was asked by her society not to come inside because she could be a carrier of coronavirus. So this kind of hypocrisy needs to stop. We need to admit that these people are going way beyond the call of the duty to provide the services they do. And they require all of our help and support right now to go through this, because yes, you rightly said that they are going through a lot of stress, a lot of fear of their own, and there have been cases of insomnia, cases of burnout. People have had complete meltdown, because you're seeing death, you're seeing disease at much larger scale on a day-to-day basis than you would otherwise in your practice. Thank you, ma'am. There's another question. How can we ensure self-counseling during this pandemic situation in COVID-19? Self-counseling, how can we ensure? Well, I would like to call it self-care, because that goes beyond counseling. So a positive mindset is very useful. Understanding that this is a transient situation, that it's not permanent, it's going to change eventually, is very helpful in relieving a bit of that stress. Talking to people who you trust, maintaining a positive network of friends and supporters is important and challenging because of the restriction on movement.
And knowing that reaching out for help, even if you're a mental health professional, is not wrong. So please reach out for help if you are seeing any symptoms of burnout, fear, anxiety in yourself. Even though you are a health professional, please reach out and get help. We'll take the last one, ma'am, with your permission. How are we supposed to handle kids with autism spectrum disorder at home science? We can't at home since we can't take them out for a therapy. Right? What suggestions can we give parents as counselors in handling them effectively? Well, I was in this situation with a couple of my patients who are suffering from autism spectrum disorder, different age groups, and it is very difficult because they are confined in the home. So they get used to a certain routine because they're going to special schools for special needs or to health centers to get services. What helped was getting them involved in a lot of sensory stimulation. So relaxing music, getting involved in doing things from their hands, such as constructing, a model or doing work with colors. And so basically ensuring that they're engaged at a sensory level, help them relieve their stress to a certain extent. And physical exercise really had positive impact. There were really interesting videos available for free online, such as PE with Joe, which a couple of parents tried and found effective. That when their children were able to spend that energy, they were able to calm themselves better. In addition to that, higher empathy towards these children and more parental support was definitely helpful. The last one, I must say, there is another one. How to tackle it is very much related to the term you have used, digital epiphany. So the question is how to tackle digital epiphany in COVID-19 or during pandemic, and how to manage screen time. Well, that's the biggest challenge right now, right? Because on one hand, it's usually like it's very useful, so to say, because without the digital platforms, we would not have been able to do a lot of things we're doing right now. On the other hand, there is a challenge of reducing the screen time. What I do personally, I don't have any research to support what I'm saying, but what I do personally is I have very strict, boundaries about my digital time and about my off-screen time. So when I'm off-screen, I'm off-screen. I don't use any devices. I don't watch television. I'm not sitting in front of a laptop. That's the time when I am with my kids. We are running around. We are playing. We're doing other stuff. Now that becomes more important when you're working from home and you're spending more and more time on screen. Because the boundary between work and life blurs because of the digital space. So I could be talking to you and I could be using my phone to be on a social media platforms. I really don't know what I'm doing right now. Am I working or I'm not working? So that needs to stop. iPhones are the biggest enemy that way. Is you're on at work 24/7. Literally, because your work can reach out to you whenever they want to. So you have to be strict. It's all right to say no. I say no many times. I tell them, no, this is my time and I'm going to, deal with this later. And that's perfectly all right, because if we will not respect our boundaries, others won't. Thank you so much, ma'am. We are running short of time. We have another speaker with us. There are so many questions, so many suggestions, so many comments. Yeah, So I must say that you have included all the aspects, whether it's a biological, psychological, psychosocial, and you have talked about high-risk people, about general population. You talked about meso and exosystems, expatriate population, right? And the new normal. Yesterday we also talked about this term, new normal. We need to learn how to behave normally during this pandemic era. And of course, you could come up with certain interventions, certain strategies we can think of. And definitely, we find so many parallels we can apply on Indian population as well. So, looking forward for more such deliberation. Thank you so much, ma'am, from the organizing committee and an entire with Mahatma Gandhi Kashi Vidyapth family, Honorable Vice Chancellor. We again extend heartfelt thanks to you, ma'am, for joining us today. Thank you so much. thank you very much. Pleasure has been mine. Next, we have with us, let me just change the role as presenter.
Okay, so next we have Dr. Kalharie Pitigala. Ma'am, I would really sorry if I pronounced it wrong. It's Kalharie. Kalharie. Okay, Kalharie Pitigala, right? Yes, you're Okay. right. Thank you. And she is a senior lecturer and a consultant psychologist. She has helped many people in overcoming their psychological issues, stress, phobias, anxieties, OCDs, learning disorder, etc. She also conducts psychology-related workshops and training programs in Sri Lanka and Maldives. Currently, she is attached to the Asiri group of hospitals as a consultant child, adolescent, and counseling psychologist. Her main research interests are in the areas of developmental disorders, pregnancy, stress, abortion, sexual health, breast cancer, region studies, domestic violence, and gender identity. She will be talking on psychological interventions during COVID-19 from a Sri Lankan perspective. So, without taking any more time, I directly request Ma'am Kalharie to start her deliberation. Thank you so much. Thank you so much for that lovely introduction, and a very good afternoon to all of you, ladies and gentlemen. So today I'm going to talk about the psychological intervention measures during the COVID from a Sri Lankan perspective. Dr. Durgesh, have you opened the slides? Just a second. Okay. You please continue. I'm just sharing it. Okay, I will open it from my laptop and keep talking. Yeah. So COVID-19. COVID-19 is a new term for all of us. We were not familiar with a pandemic before. Especially, it's a very new terminology for the Sri Lankans. We were not prepared for any change. So, World Health Organization declared the outbreak of a new coronavirus disease to be a public health emergency of international concern in January 2020. In March 2020, WHO declared that COVID-19 has reached the status of a pandemic. But why is it so difficult for us? Why did COVID got so popular and it gave such a heartbreak to all of us? In my interpretation, after reading a lot of metaphysical information as well, I feel that we all were in a rat race just before the COVID. For a long period of time, we were in a rat race trying to achieve our needs and means. So I think, according to the Newton's third law, every action has an equal and opposite reaction. So this is where this comes in. I feel this is the opposite reaction, equal and opposite reaction of the universe in order to make us think, give us more time to have a break. Yeah. Is the screen visible to all of us? Rashmi, is it visible? Mukesh sir? Yes, I can see it. Yes, it is visible. Okay, thank you. Shall I continue? Please, ma'am, please continue. Yes. So I think from this perspective, it is an equal and opposite reaction of the universe to make us stop for a while and understand as well, to have more awareness, to have more clarity in mind, and to move on, to make us love ourselves more. Because we were all in a rat race before, and I feel that we were just moving ahead without giving time for ourselves and without having much understanding or love for ourselves. So, next, our psychological preparedness was quite low when it comes to facing a pandemic, especially for Sri Lankans. It's a very new terminology, and we were not familiar with a pandemic before. Prevalence. Up until today, there had been 1,806 confirmed COVID cases, out of which 891 have recovered, and there had been 11 deaths. COVID-19 related stresses. I have pinpointed only the most prevalent kind of stresses, but there are many more. Fear of being exposed to the infectious sources. This was a very big stressor because a lot of information was put forward, and we were told to wear masks, the curfew was on. Likewise, everyone had a lot of fear that the contamination of this would lead to death. So more than people giving information about
ways to tolerate and ways to face it, people most often spoke about the fear related to it. From the Sri Lankan aspect, I think it is not very much of a good sign. But by all means, it was done to control the spread. People are more alert and they would wear the masks and they would take necessary precautions. However, the fear was more than people being alert and cautious about it. People were very fearful because of the information that was given out. Loss of loved ones. Definitely, it's a very big stressor, and most of the people who lost their loved ones, there were 11 individuals who lost their lives because of COVID up until today. So most of the people underwent a lot of difficulty because of this, because majority could not even attend to their funeral, their cremations, because I think only one person was allowed to join the cremation ceremony from each family. Infected family members were another problem. So infected people were sent to the hospital, whereas the others, for obvious reasons, will not be allowed to go and see them. And even the family members were sent for quarantine. So quarantine centers were quite far from Colombo. However, they were given all the food and all the requirements were provided free of charge. Economic loss was a great problem. Most of the businessmen lost their businesses and some companies had to be closed. Majority lost their jobs. Some companies paid only half of the monthly salary and people faced a lot of problems like that. And especially this was imminent in the poverty-stricken areas. People did not have a way of living. But government initiated a scheme where the people who are underprivileged and who did not have any source of income to be given 5,000 rupees every month. But in order to get that, they had to prove that their income is very low and they have lost their jobs. Also, they had to go and meet the Grama Sevaka. Grama Sevaka means the village head. So they had to prove to the Grama Sevaka that they are not earning a proper income in order to get this dole. Psychosocial effects was very much prevalent. Depression, anxiety, psychosomatic preoccupations, insomnia, increased substance use and domestic violence. So most of the people who are alcoholic were not able to, because no alcohol was available, and they came to a position where they could not take it anymore. They couldn't stand their family members. So a lot of cases in this regard was there. The domestic violence rate was increased. Consequences of the COVID. As a matter of fact, a long period of self-quarantine, curfew, and a lockdown. So most of the things were stagnated. People had to work from home, homeschooling. And when it comes to the Colombo suburb, people were quite affluent. They have their technological devices and they were somehow able to get through to all their needs and means. For example, if they want to order some food, they can do so by clicking onto one of the supermarkets, and in about 2 to 3 days' time, the food will be delivered. But people from far away rural areas did not have their technological devices, and also they were not quite familiar with going online, and they were never. This is totally a new system to Sri Lanka. Working from home was also difficult, especially for the parents to tackle the children. Temporary unemployment. Some people lost their jobs, and some people had temporary unemployment where they were not given a monthly salary. Homeschooling of children again was quite difficult because people did not have the technological devices to connect to the teachers, and also they were not familiar with this. And also the parents found it difficult because of homeschooling and work from home. Everything happened within one entity. So everyone was together, and it was a big change to how it was before.
So whilst attending to the children's needs, the parents had to carry on their work as well. So this was definitely a big stress for them. Lack of physical contact with others led to a lot of frustrations, especially the people who are very outgoing and introverts. They found it extremely difficult. And if you take as an example, I'm also a very introverted person. I'm very people-centered. I love talking and meeting people. So I found it extremely difficult. There were days I couldn't cope. I was tearing. So, but when I talk to many people, I figured out that they were also feeling the same. Adapting to lifestyle changes was also difficult. It was a stressor because most of the things had to be done online, and some people had to stop their wedding ceremonies and they had to be postponed, and people came across lot of difficulties like that. Difficulty securing medical care and medication. So specific hotline was given and people were supposed to ring on that line and give the list of medications that they need. And it took about 1 week for the medicines to be arrived. Managing the fear of contracting the virus. Like I explained before, that was also an issue. Sleep disturbances were there because we were all trying to somehow spend the day doing something. Most of the people were very much attached to the television. So as a matter of fact, there were a lot of sleep disturbances, maybe because the functioning of the circadian rhythms changed and got used to a new way of it, subsequently getting the sleep patterns disturbed. Many was ultimately insomniac. So people, nowadays there were a lot of patients and clients for problems with insomnia. Having inadequate supplies. Yes, the demand was so high because during the curfew was on for about 2.5 months, and in between there were days where the curfew was lifted only for few hours, where people were able to go out and purchase what they want. Only few supermarkets and some boutiques were opened. So because of that, the demand was so high. People even collected stuff. They bought stuff for months and months. So because of that, some people missed getting certain requirements that they had because of the inadequacy. Okay, vulnerable groups. Like Dr. Anamika mentioned before, even in Sri Lanka, the elderly population was very much affected. And the children as well, because children are the people who used to play and go out, meet their friends, mingle with others. So they found it very difficult, and also they did not know how to express it. And sometimes because their parents and the adults are also burdened with their work, they did not have time to listen to the children. The children were not accepted. That was another issue. Individuals with pre-existing physical or psychological conditions were also more vulnerable. So they were anyway advised. A lot of publicity was given to encourage them to take their medicines on time, and also to look forward to getting appropriate medical advice, because teledoctor facility was available where the people were able to connect to the doctors online. Elderly people with compromised immune function, as Dr. Anamika mentioned earlier, and those living or receiving care in congregated settings were also very much vulnerable to this condition. And people were stagnated in one place. They were not able to go about, walk about, so poor exercise. As a matter of fact, they had sleep disturbances because they were not feeling tired. They were more like numb emotionally and physically. Both they were feeling numb. So this led to a lot of adverse psychosocial outcomes. However, we as psychologists gave publicity and spoke to people as much as possible, giving out the message that it's quite normal to be feeling stressed
during this current situation. However, it was important to be aware and then accept it and then look for action. Hello? Yes, it was important to be aware, then accept the situation, and then look for action. So this is the theory that we focused in the process of looking for interventions. Feeling stressed does not mean that you cannot do the job. So it's not that you are incompetent. It's a totally new change. So that is how we came across this situation, and this is common to everyone. So we tried to inculcate that thought in people so that people are trying to be more aware of the situation and try to accept the change and work accordingly so that they can face the future. So it was very much of a need to make them feel resilient, because resilience is what is mostly important at this stage, because now that the COVID has happened, it's not like we can remove it or we can't completely forget it, but we can always look forward for the future by being resilient. Psychological symptoms here and there, I think I mentioned few before as well, but predominantly the immediate psychological symptoms were sadness and frustration, low self-esteem, anxiety, violence, insomnia, stress, and irritability. Most of the people said that they were feeling irritable, and even the people who were very active and were able to do their work very methodically came to a situation where they are kind of numb and they don't express themselves and they did not feel like working anymore. So they thought that this is it and there is no end to it and they can't move forward. But with lot of effort by disseminating lot of information, people were able to, we were able to inculcate that there is still hope and we can move forward and we can get over this situation. On the long run, one of the primary concerns were post-traumatic stress disorder. So no matter what we do, there would be at least a few percentage that will be drawn to the post-traumatic conditions. However, we are taking precautions to prevent that, and we are trying to make the people very resilient so that such circumstances would be reduced. Psychological interventions. So there was a hotline 1390 meant specifically for people who are stressed. So they can at any time give a call free of charge and they get connected to a professional counselor or a psychologist. So they can take any time and they can keep talking and express themselves. So I think this was one of the best interventions that took place during these 2 months, and it's still on. I think this will be continued for some time period until people feel more resilient and their psychology is back to a better condition. And also automated services like SMSing calls from different telephone service providers were given free of charge, and a lot of positive messages were shared that there's hope, how to be resilient, and there were online programs, and some of the trainers gave certain online programs where people can learn along with an e-certificate. So people who did not have a good educational background got this opportunity, and they were able to make use of it, and they were able to learn a lot. So the positive side was that even though there were so many negative sides, the people had some positive things as well. Limit the number of times you seek information. Yes, so as psychologists, we also gave the message that they should limit the number of times that they seek the COVID-related information. Information as in not the information to take care of themselves, but the information related to deaths. So the more you embrace the negativity, the more you see the negative side, the sadness, the frustration, you're more likely to embrace it. So we encourage people not to
not to always look for the number of deaths from time to time, but rather get involved in different activities which would be fruitful for them and also would be beneficial for them in the future. For example, learning something new that they were not able to learn up until now. Be mindful and practice mindfulness. So that was very important. Living in the present moment is something that we can get over the situation. There's no point worrying about the past because it's over now, but we have to be very mindful and we have to listen to ourselves, accept ourselves for who we are, and then think of moving ahead. So now, after listening and seeing a lot of information which is fearful and which is not very pleasant, I would say, our subconscious mind is full up with a lot of garbage and also a lot of negativity. So it's important to rewire it. So in the process of rewiring your subconscious mind, we encourage our patients to be more mindful, do a lot of breathing work, take deep breaths, and ego eradication strategies were taught, and they were taught to be more mindful so that they can slowly get over this process. And more than getting over the whole scenario will take a bit of time, but as for now, as psychologists, we encourage them to be resilient and try to understand the situation, accept it, and live happily for the moment. Seek information from reliable sources. So it's important to look for reliable sources. So some people were spreading rumors, but it was not very apparent. Only a few cases were recorded. So that was also important as a psychological intervention, because some people got scared by just listening to unreliable sources. So people were educated on this as well. Be responsible for yourself as well as others. That was very important. Even I think this was a very good time period where this factor to be inculcated in the children as well. Children from this time onwards, if children also can learn to be responsible and be there for yourself, I think it's a very good thing. Engage in healthy activities that you enjoy. For example, yoga. A lot of yogis, a lot of yoga teachers offered their classes online, so people were able to participate, and most of the time they were free classes. So that was another psychological intervention. So people had something to engage, especially something like yoga is a release. It's a means of unwinding. So it was of great help for most of the people. And also people were educated to have their meals on time and also to take safety precautions, especially when it comes to food, eat healthy food, to have a balanced meal. Because these little things, though they sound very simple and babyish, might be ignored by people at this time because of the pandemic and because of what is running in their heads, because of the frustration that they are being led to. There is possibility that they may even forget these very simple facts. So because of that, it was another intervention taken. So we were always giving information, sharing information on social media platforms, and encourage them to take care of themselves with regard to food and exercise and the simple factors as such. And also the people were told to utilize this time to do something that they love. And especially for the parents now, even though they kept saying it was a very difficult time because they have to work from home. On the other hand, if you actually have a proper chat with them, some of the parents were able to come and tell that it was kind of a gift as well, because they got some time to spend time with their children as well. So this cognitive restructuring was another psychological intervention. So whenever they came up with a problem, rather than trying to solve it
by getting them centered in the problem, cognitive reconstruction was done. So if a parent comes and says, okay, I find it extremely difficult to concentrate on my office work while doing it from home. Home working is extremely difficult. You can encourage them by saying, but during the time that you actually went to the office, you may have criticized, saying that you did not have time to spend with your loved ones, with your kids. So why don't you look at this as an opportunity to spend some time with your kids as well? So likewise, cognitive reconstruction or reframing was done done as another psychological intervention. And also the positive affirmations, it was very important because positive affirmations help them to look at life in a better way, in a more successful way, and it's a long-term, it's a very long-term effect. So most of the time we encouraged our patients or the clients, and shouldn't necessarily be a client or a patient, but generally the population, to make positive affirmations to themselves, like I'm a victory and I'm not a victim. So every morning or every evening, at whenever possible, if they keep on saying that they're a victory and not a victim, that is there in their subconscious mind, and that is what you act for. So most of the people, after practicing such positive affirmations, came to me and said that it had been very positive, and it had a very positive effect on them. So last but not least, change is inevitable. So this is something that we keep in mind. We should keep in mind, because change is inevitable. We have to be ready for change. That is why these positive affirmations are required. And also, you have to start looking at everything as an opportunity. So without looking at Corona as a big disruption, if you can take it as an opportunity and start from all over, I think it would be a blessing. So I would like to conclude my presentation by giving the slogan, yesterday is history, tomorrow is a mystery, but today is the gift. So be conscious and attract a lot of positivity. Thank you very much. And if you have any questions, I can answer. Definitely, there are certain questions, ma'am. First of all, thank you so much for this wonderful presentation. So we can quickly take 2-3 questions. I think I'm audible to you. Yes. Yeah. So the very first question is, what is Sri Lanka's COVID-19 response strategy to deal with the mental health issues of the underprivileged? Can you repeat it? I was not very clear. I couldn't hear you. What is Sri Lanka's COVID-19 response strategy to deal with the mental health issues of underprivileged? Yes. So we have a free healthcare system. So healthcare is free in Sri Lanka. And there was an ambulance service available as well. There was a particular number, I can't recall the exact number, like 139, there was another number. So in case of an emergency, they can ring to that particular number, get the ambulance, and they can reach the medical services. And also the PHI public health inspector availability was also there. So during the curfew times, first and foremost, they had to consult the immediate police station, and if it's not a very severe situation, the police will get the PHI to visit their residence, and then the PHI will refer the patient to a doctor. But in case of an emergency and a very severe situation, they can call the ambulance and they can go to the nearest hospital, and that is also a free service. Anyway, the healthcare system, the governmental healthcare system in Sri Lanka is free of charge. Great to know that, ma'am. This is really very good. And the second question, kindly suggest some good measures to reduce stress from school children who are passing through a very tough time in their studies due to COVID-19. Yes. So for children, I would say art therapy. Art therapy is of great help. And also there should be some change of what they are going through right now. So just talking to them also won't do, but respect them, get them to talk, and
practice something that is new. So they are quite stagnated and going through a very monotonous life these days. So children find this monotonousness very difficult. So there should be something which is new. This novelness could cause some change in them, and that would subsequently reduce their stress. So, for example, art therapy, getting them to draw, or maybe along, if they can play along with the parents, because usually the children don't get a time to play with the parents. So if the parents can get together with them and build a doll's house, I mean, this may change from person to person. One child might like to play with dolls, but the other child might not like to do the same. So first and foremost, it's important to understand what the exact requirement is, and if you can fulfill at least up to 50% to their need, their stress will I'm sure their stress would go down up to a great extent. Okay, so there is another, it's not a question, rather a topic being suggested, or I think she wants your point of view or perspective on this. Okay. This is resilience and post-traumatic growth after COVID-19. What kind Okay. of relationship you think it will be there? Between PTSD and resilience and post-traumatic growth. Resilience and post-traumatic, so resilience is being able to face the adversity. So I mean, it's not a spontaneous thing. We can't immediately inculcate resistance or resilience in a person. That may take some time. But however, if we can carry out certain things in order to reduce our stress and to be more resilient, that would reduce the PTSD rate. Did I answer the question, or do you need any more explanation on that? Because now the question was the relationship. So I would say there is certainly a relationship between the resilience and the PTSD. So if you practice resilience, PTSD on the long run would reduce. So in order to stop the PTSD post-trauma, you can improve, or you can inculcate the resilience habits. For example, if you can encourage people to practice mindfulness, and if you can encourage people to face change, change is inevitable, and if you can help them to accept that, chances are very likely that the PTSD rates would go down. Yeah, thank you so much, Dr. Kalharie. I think I pronounced correctly right this time. Yes, Kalharie. Yes, thank you so much, Dr. And you have beautifully talked about psychological interventions, prevalence in Sri Lanka, related stressors, consequences, vulnerable groups, and of course the psychological symptoms, whether immediate or long term. You could talk about certain interventions that we all can find very meaningful and apply. And yes, you have ended with this, that change is inevitable, no doubt about this. So thank you so much on behalf of Honorable Vice Chancellor, sir, Head of the Department of Psychology, Mahatma Kashi Vidyapth, entire organizing committee. We extend our heartfelt thanks to you, ma'am, for joining us today. Thank you so much. It's really wonderful to see our yesterday's speakers who have joined also today. It shows their concern, their sincerity, and their sense of belongingness for the humanity. So I take the opportunity to welcome them all for today's session as well. So with this, we are ending our scientific session or lecture series, and we'll start the valedictory session. So for valedictory session, I would request Dr. Rajen Singh, sir. He is the Associate Professor in the Department of Psychology, Mahatma Gandhi. For a welcome address, we have with us our Honorable Vice Chancellor, sir, who is in the panel. Welcome, sir. And I can see our chief guest has already joined. Professor P.K. Rai, sir, welcome. Professor Rajen Singh, sir, guest of honor, he is also joined already.
सो राजेंद्र सिंह सर, एम आई ऑडिबल? आप तक आवाज जा रही है सर? आपका ऑडियो म्यूट है सर, राजेंद्र सिंह सर। मेरी आवाज पहुंच रही है कि नहीं? जी 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 सर, अब आ रही है। जी सर। सर अच्छा है। जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ सर फॉर वेलकम एड्रेस। धन्यवाद गुरु जी। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ मनोविज्ञान विभाग द्वारा आयोजित इंटरनेशनल वेबिनार ऑन मेंटल हेल्थ एंड कोविड-19 की वैलेडिक्टरी सेशन में अध्यक्षता कर रहे माननीय कुलपति जी, हम लोगों को ईश्वर की कृपा है कि इतने यशस्वी कुलपति मिले हैं जो महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ को निरंतर आगे जा रहे हैं। आपके प्रोत्साहन और आपकी प्रेरणा से वेबिनार की सेंचुरी लग गई महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में, और भी आगे बढ़ती जाएगी। जब से सर आए हैं निरंतर काशी विद्यापीठ और मनोविज्ञान विभाग की उन्नति हो रही है। आज के इस सत्र के में प्रोफेसर आर्यन सिंह साहब, आप काशी हिंदू विश्वविद्यालय प्रोफेसर के रूप में अपनी सेवाएं दी, और हम समझते हैं कि सर की कम से कम 20 पुस्तकें विविध मनोविज्ञान के विविध क्षेत्र में प्रकाशित हैं और 25 टेस्ट भी आपके प्रकाशित हैं। सर, आपका स्वागत करता हूं कि आप हम लोगों के इस वेबिनार में आपने समय दिया, हम लोगों के आग्रह को आपने स्वीकार किया। प्रोफेसर पीके राय जी। नमस्कार सर। नमस्कार सर। नमस्कार। जब भी हम लोग महात्मा गांधी, हाँ सर, जब भी महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में कोई भी कार्यक्रम हम लोग लेते हैं, सेमिनार का हो, वेबिनार का हो, चाहे जो भी हो, नेशनल हो इंटरनेशनल हो, सर का मार्गदर्शन हम लोगों को प्राप्त होता रहता है। सर से हम लोग आग्रह करते हैं, बिल्कुल जैसे लगता है कि आपकी अपनी संस्था है, इस भाव से सर तैयार होते हैं, मन बनाते हैं, हम लोगों के बीच में आते हैं, हम लोगों का प्रोत्साहन करते हैं। सर, आपके प्रति भी मैं सम्मान करता हूं, आपका स्वागत करता हूं। आज के इस कार्यक्रम में जो भी वक्ता, जैसे डॉक्टर अनामिका जी, डॉक्टर अभी श्रीलंका से कलहरी जी, आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और अपने विभाग के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर आरपी सिंह साहब, जिनके नेतृत्व में विभाग निरंतर आगे बढ़ता जा रहा है, आपका भी स्वागत करता हूं। हमारी जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है इस वेबिनार की, हम सभी अपने विभाग के अध्यापकों, कर्मचारियों एवं विद्यार्थियों का भी मैं स्वागत करता हूं। साथ ही जितने भी पार्टिसिपेंट हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सबका मैं स्वागत करता हूं महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ की ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की ओर से। और हमें लगता है कि जो टॉपिक हम लोगों ने चुना है सबके सहयोग से, इसका प्रभाव दिखाई भी दे रहा है। कोविड-19 के भय से अभी हमारे पड़ोस में जिला है गाजीपुर, यहाँ 2 लोगों ने आत्महत्या कर ली, बिहार में 2 लोगों ने आत्महत्या कर ली। जो आएगा सामने उसको देखा जाएगा, हिम्मत के साथ खड़े होकर के उसका मुकाबला करना चाहिए। लेकिन लोग डर गए, उसके प्रभाव से भयभीत होकर के आत्महत्याएं कर ली। ये समस्याएं हैं राष्ट्र और समाज और दुनिया के सामने। इस समस्याओं से कैसे निजात पाया जाए, इन विषयों को ध्यान में रख के टॉपिक चुना गया और इस पे हम लोगों ने कल से ही
इस पे वेबिनार का कार्यक्रम प्रारंभ है और ये आगे बढ़ता गया। तो आज वैलिडिटी सेक्शन में हम लोग साथ बैठे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः सभी लोगों का स्वागत करते हुए, सभी लोगों के प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए मैं अपने वाणी को विश्राम दे रहा हूँ। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। ठीक, आगे बढ़ाएंगे कार्यक्रम को। इसके बाद हमारे बीच में, जैसे कि सर ने ऑलरेडी बता दिया है, सर के बारे में जितना कहा जाए कम है। हम सब के वो अभिभावक हैं, गार्जियन हैं। हमारे आज के विशिष्ट अतिथि, गेस्ट ऑफ ऑनर, प्रोफेसर RN सिंह सर। If I'm audible to you, sir, now I request you for your address. Professor RN Singh, sir. Durgesh, I think he is not in the panelist list. Durgesh ji? Okay, so I think... please call Dept Rai, sir. So we'll wait for Professor RN Singh, sir. Once he joins, we'll ask him to bless us. Now we have with us our chief guest for today's valedictory session, Professor PK Rai, sir. So PK Rai, sir, if I'm audible to you. PK Rai, sir, I request you to deliver your address, sir. Professor PK Rai, sir, was former head and Department of Psychology, Dr. H.S. Gour, Central University, Sagar. PK Rai, sir, आवाज जा रही है हमारी आप तक? आ रही है, सुन रहा हूँ मैं। सर आप प्लीज शुरू करें सर, हम लोग इंतजार कर रहे हैं सर आपका, आप प्लीज शुरू करें। Sir, I welcome you for your address, sir. Professor PK Rai, sir, we welcome you for your address. हाँ, नहीं मुकेश जी, मैं आपकी आवाज सुन रहा हूँ। आप मेरी आवाज सुन रहे हैं? हाँ सर, मैं आपकी आवाज सुन पा रहा हूँ। आवाज आपकी आ रही है सर। अभी RN सिंह साहब को बोल रहा है ना? RN सर अभी इस समय ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं। प्लीज सर आप अपना एड्रेस स्टार्ट करें सर, प्लीज। अब मैं अपनी बात शुरू करूँ? यस सर, RN सर की कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम हो रही है, प्लीज सर। नहीं, तो मैं शुरू करूँ ना? यस सर, यस प्लीज। ठीक, ओके। इस प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थान महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के मनोविज्ञान विभाग द्वारा आयोजित इस प्रतिष्ठा आयोजन के समापन के अवसर पर मुझे अपनी बात कहने का मौका आपने दिया है। आप सबको बधाई। इस विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर TN सिंह का मैं अभिनंदन करता हूं, जिनके नेतृत्व में एक बहुत ही सुंदर और अच्छा कार्यक्रम, जिसमें कि बौद्धिक विचार विमर्श हुआ है और COVID-19 से जो समस्या है, इससे हम कैसे पार पाए, इसके लिए इससे गति भी मिलेगी। इसके साथ ही साथ मैं विभाग के अध्यक्ष और हमारे मित्र प्रोफेसर RP सिंह का अभिनंदन करता हूं, जिनके निर्देशन में प्रोफेसर राजन सिंह जी, श्री दुर्गेश जी, श्री मुकेश जी, मैडम सिंह और अन्य सभी सहयोगी इस कार्यक्रम को सफल बना रहे हैं। ये मुकेश जी, मेरी आवाज साफ आ रही है ना? नहीं आ रही है सर, आ रही है आपकी आवाज। ठीक है, ओके। आज की ये जो विभीषिका है, ये मानव की सिविलाइजेशन में, मानव की जो सभ्यता और संस्कृति है, जहां तक हम लोग देख पा रहे हैं, ये सबसे इट इज मोस्ट कैटास्ट्रोफिक सिचुएशन। ये सबसे बड़ी त्रासदी है मानव के सभ्यता और संस्कृति के लिए। साथ ही साथ इस कैटास्ट्रोफी की विशेषता यह है कि ये एक इवॉल्विंग एंडेमिक है और
ये इवॉल्व हो रही है और इसी के साथ साथ ये डेवलपमेंटल क्राइसिस भी है। बच्चे भी बीमार हो रहे हैं, युवा पीढ़ी भी इसका शिकार हो रही है और वृद्धजन भी शिकार हो रहे हैं। तो इट इज ए इवॉल्विंग एंडेमिक एंड एज वेल इट इज ए डेवलपमेंटल क्राइसिस ऑल्सो। इस क्राइसिस के साथ एक बहुत बड़ी विशेषता ये है कि एवरीथिंग इज रैप्ड इन द मिस्ट्री। सब कुछ एक मिस्ट्री सा दिख रहा है। इस वायरस का, जिसको कि चीनी वायरस आमतौर पे कहा जाता है, वायरस तो चीनी ही है, डिजीज कोविड है। इसकी शुरुआत कैसे हुई? हम मनोविज्ञान के विद्यार्थी हैं। अमेरिका की 70% जनसंख्या ये मान रही है कि ये वायरस लैब से लीक हुआ। लैब से अगर लीक नहीं भी हुआ तो ये कुछ जंगली जानवरों के संपर्क में मनुष्य के आने से, उनके मांस भक्षण से ये इसकी शुरुआत हुई होगी। पहले कहा गया कि चमगादड़ के थ्रू आया। आज मैं पढ़ रहा था कि अब इस बात पे रिसर्च हो रहा है कि पेंगेलियन से आया। तो अब आप ये देखिए कि ये पहले ये कहा जाता रहा था कि ये केवल ओल्ड एज पॉपुलेशन इससे सफर होगा, लेकिन यंग पॉपुलेशन भी इससे सफर हो रहा है। और ओल्ड पॉपुलेशन तो केवल इस वजह से सफर हो रहा है, कर रहा है कि उनमें और सी प्री मॉर्बिडिटी है, अन्य बीमारियों के साथ है। लेकिन ये नहीं समझना चाहिए कि इसका जो स्कार है, इसकी जो छाप है, इस बीमारी का जो प्रभाव है, ये लंबे समय तक यंग जनरेशन पर भी होगा। और जो इससे ग्रस्त होंगे उनके जो वाइटल एलिमेंट ऑर्गन्स हैं उन पे जैसे गैस त्रासदी का प्रभाव हुआ था, ऐसे बहुत लंबे समय तक इसका प्रभाव परिलक्षित हो सकता है। ये पोस्ट पेंडेमिक पीरियड में जो रिसर्चेज होंगी उससे ये पता चलेगा, ये भविष्य के गर्भ में छिपा है। मैं डेटा के तह में नहीं जा रहा हूँ, लेकिन मैं इस मौके पे इस अपने देश के एक बहुत बड़े विजनरी और समाजसेवी और उद्योगपति टाटा को कोट करना चाहूंगा, क्योंकि मेरी सारी बातचीत आप देखेंगे कि इसके इर्द गिर्द होगी। टाटा ने एक दिन अपने संबोधन में कहा कि डोंट वरी अबाउट योर प्रॉफिट्स एंड लॉस, डोंट वरी अबाउट ड्रीम्स एंड प्लानिंग, दिस ईयर टू स्टे अलाइव इज इक्विवेलेंट टू प्रॉफिट ओनली। तो अब आप ये देखिए कि इन सारी बातों के इर्द गिर्द हमें विचार करना है। और अब मैं अपनी बात शुरू करूं कि ये एक वार की सिचुएशन है, और वार की सिचुएशन में एक कॉम्बैटिंग सिचुएशन होती है। तो आज एक मेडिकल कॉम्बैटिंग हम कर रहे हैं, जो मेडिकल रेजिमेंट है, जो ट्रीटमेंट के तमाम तरीके हैं, उनको हम अपना रहे हैं। लेकिन आज जो दिल्ली की सिचुएशन है, जिसमें कि ऐसा लग रहा है कि वहाँ के मुख्यमंत्री को ये कहना पड़ा कि दिल्ली में बेड की कमी हो रही है, बेड्स की ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, तो ये क्या बता रहा है? तो इसने मुझे आज ये कहने को विवश किया कि मैं इस पर बात करूं कि हाउ द सिचुएशन हैज बीन क्रिएटेड। तो मैं जो बात कर रहा था वो ये कि देयर इज ये जो कॉम्बैटिंग है वो मेडिकल सिस्टम की है, और एक कॉम्बैटिंग जो है वो साइको सोशल रेस्पॉन्स की है कि समाज उसके साथ कैसे लड़ रहा है, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक रूप से देश उससे कैसे लड़ रहा है। मुझे ये लगता है कि इन दोनों में बहुत बड़ा लय है। जो मनोवैज्ञानिक और सामाजिक जो कॉम्बैटिंग होनी चाहिए, इसमें हम पीछे हैं। और मैं सबसे पहले इसके कारणों की खोज करना चाहूँगा कि ऐसा क्यों हुआ। देखिए, ये हम सब जानते हैं कि ये एक स्ट्रेस की सिचुएशन है, और स्ट्रेस के मुख्यतः 3 कारण होते हैं। 3 तरह के स्ट्रेस हो सकते हैं 3 प्रकार से। एक तो फीलिंग ऑफ अनकंट्रोलेबिलिटी, अगर लोगों में ये विश्वास हो कि शायद हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, जो कुछ सीमा तक इसके साथ है।
दूसरी बात की इनएविटेबिलिटी, दिल्ली के लोगों के और देश के लोगों को लग रहा है कि भाई आज नहीं तो कल हम इससे प्रभावित जरूर होंगे। और कम्युनिटी ट्रांसमिशन की बात भी चल रही है। कलेंस के डायरेक्टर से बार बार ये पूछा जा रहा था कि कम्युनिटी ट्रांसमिशन तो नहीं है, होने वाला तो नहीं है। और तीसरी कारण है कि अनप्रेडिक्टेबिलिटी, कि ये कब आ जाएगा डिजीज। जिन एरियाज में, संसार के जिन भागों में ये खत्म हो गया था, वहां भी ये केस आ रहे हैं। अपने देश से भी कुछ एरिया, कुछ स्टेट्स में जिनमें कि शून्य हो गया था फिगर, वहां भी अकेला है। तो ये जो तीनों चीजें हैं, ये तीनों चीजें किसी न किसी परिणाम में परिलक्षित हो रही हैं। और शायद उसी उसका कारण ही है, उसी का कारण है कि आज दिल्ली में जो सिचुएशन बन रही है वो एक हाई स्ट्रेस की सिचुएशन है। और इसके लिए कम्युनिटी रेस्पॉन्स में, पूरे देश के रेस्पॉन्स के सिस्टम में बोल रहा हूँ कि हमको इस स्ट्रेस को कॉम्बैट करने के लिए अब से भी तैयारी शुरू करना चाहिए। और वो तैयारी क्या हो सकती है? आज ये देखिए कि इसके जो सिम्टम्स बताए जा रहे हैं, इन सिम्टम्स में भी रोज बहस होती है, लेकिन आम तौर पे ये है कि सर्दी जुकाम, और इसके साथ साथ अगर बुखार हो, और बुखार के साथ अगर सांस लेने में तकलीफ हो, दर्द हो, तो जब सांस लेने में तकलीफ होने लगे तो ये समझ लीजिए कि ये आप कोरोना वायरस के रेंज में है। अब आप ये देखिए कि हो ये रहा है कि अब मैं जो बात करना चाहूंगा वो ये है कि स्ट्रेस और इम्यून सिस्टम कैसे संबंधित हैं। तो जो मैंने तीन आपको बातें बताई, इन तीन, अनप्रेडिक्टेबिलिटी, अनकंट्रोलेबिलिटी और इनएविटेबिलिटी, कि इन तीनों चीजों के कारण लोग स्ट्रेस के सिचुएशन में हैं। और स्ट्रेस हमारे इम्यून सिस्टम को प्रभावित करता है। एक नई डिसिप्लिन जो साइकोलॉजी में डेवलप हुई, जिसको हम साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी कहते हैं। साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी में ये प्रूव हुआ कि अगर हमारे जो बिलीफ है, हमारे जो एक्सपेक्टेशंस हैं, वो अगर निगेटिव हैं, अगर हम निगेटिव एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं, अगर हम स्ट्रेस की अवस्था में है, तो ये हमारे इम्यून सिस्टम को प्रभावित करता है। और हमारे इम्यून सिस्टम के जो सेल्स हैं, टी सेल्स और बी सेल्स, इन दोनों प्रभावित होते हैं और बीमार होने की संभावना बढ़ जाती है। तो हम सब जानते हैं कि सर्दी जुकाम और फ्लू स्ट्रेस की अवस्था में बहुत तेजी से ग्रो होता है। ये रिसर्चेज में साबित हुआ है और एक्सपेरिमेंटल स्टडीज में भी साबित हुआ है। और आप सब ने देखा है कि एग्जामिनेशन के स्ट्रेस के समय ये चीजें आती हैं, तमाम तरह ये भी होता है, सर्दी जुकाम बुखार, ये चीजें होती। तो लोग ये निश्चित नहीं कर पा रहे हैं कि उनको आखिर कोरोना है या नहीं। कि वो लोग समझ रहे हैं कि अगर हमें सर्दी जुकाम हुआ तो हम कोरोना की स्थिति में हैं, एंड पीपल आर रशिंग टू हॉस्पिटल्स। तो इस चीज को समझने के लिए जो कम्युनिटी इंटरवेंशन होना चाहिए था, जो हर कम्युनिटी में जागरूकता, कल मुख्यमंत्री ने कहा भी है कि आप लोग टेस्ट सोच समझ के कराएं, लेकिन टेस्ट कब कराएं, इसके लिए जो एक फियर साइकोसिस मीडिया ने तैयार कर दिया है। और इतना सारा इंफॉर्मेशन है कि लोग ढंग से प्रोसेस नहीं कर पा रहे हैं, और सर्दी और जुकाम और हल्का सा बुखार की स्थिति को भी कोरोना की स्थिति समझ रहे हैं, और लोग हॉस्पिटल की ओर दौड़ रहे हैं। तो देखिए, इस सिचुएशन को, इस साइकोलॉजिकल वारफेयर के लिए हमें तैयार होना पड़ेगा और ये समझना पड़ेगा कि इस स्ट्रेस को कम करना पड़ेगा इस काउंसलिंग के द्वारा, कि हर सर्दी जुकाम और बुखार जो है वो कोरोना नहीं है। और हम लोग जो नॉर्मल प्रैक्टिशनर हैं उनको इस चीज के लिए ही को अलाउ करना चाहिए कि उनको सजेशंस दे सकें, और केवल कोविड हॉस्पिटल में ही इनका ट्रीटमेंट न हो। तो ये हमें एक कम्युनिटी लेवल पर आज इसको रोकने के लिए, इसके प्रसार के लिए और ये मेंटल हेल्थ के लिए भी जरूरी है, एक बहुत बड़ा इशू है। मुझे याद है, अगर मैं हेल्थ साइकोलॉजी के फादर ऑफ हेल्थ साइकोलॉजी मेट्रेजो को कोट करूं, तो मेट्रेजो ने बड़ा साफ कहा था कि आवर लाइफ टाइम बिहेवियरल मिसमैनेजमेंट begins to express itself
in the form of chronic diseases like cancer, diabetes, and other diseases. And now we may say that this is also a resultant of our behavior also. अब देखिए आपकी एक तो ये सिचुएशन है कि मुझे लग रहा था कि आज मुझे इस पर बात करनी ही चाहिए, क्योंकि आज देश की एक ज्वलंत समस्या है और आज ही ये दिल्ली में परिलक्षित हुआ। तो कहीं ना कहीं हमारी हेल्थ पॉलिसी में वी हैव टू इंक्लूड community counseling or community intervention at the deeper level, so that people can understand that they are not suffering from the corona, and there have to be something to reduce their stress, और ताकि वो उनमें सर्दी जुकाम और ये चीजें जो हैं स्ट्रेस के कारण डेवलप न हो। और दूसरी बात यह है कि इसको स्ट्रेस को खत्म करने का एक और तरीका है कि जिसके थ्रू हम स्ट्रेस को रिड्यूस कर सकते हैं और मेंटल हेल्थ को प्रोलॉन्ग कर सकते हैं। दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि जिस परिणाम में भारत में ये वायरस फैल रहा है, now it is very likely that most of the people will be having this virus in our body, but it is very likely that majority of the people will not develop COVID-19 in our lifetime, provided we practice the medical regimen like distancing, use of the mask, and other things which are important to enhance our immunity. तो ऐसे में वायरस हमारे पास आएगा, लेकिन वो उसकी जो वायरलिटी होगी वो बहुत कम होगी, and our body will create the antibody and will survive, and in most of the cases it will not surface also. तो ये एक इम्पोर्टेंट चीज है। दूसरी बात यह है कि जो इसमें रिसर्चेज साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी की हुई हैं, इनमें एक और बात यह आ रही है कि और ये इसके दोनों पहलू हैं, इसके अच्छी पहलू भी हैं और इसका बैड एस्पेक्ट भी है, कि ये देखा गया है कि जब भी एक अनसर्टेनिटी और स्ट्रेस की सिचुएशन होती है, ये कोरोना वायरस के में ही यही संदर्भ में इस पर अध्ययन किया गया था, दैट इज कॉल्ड बिहेवियरल इम्यून सिस्टम। तो अब मैं जो बात करूंगा वो दो तरह की इम्यून सिस्टम की बात करूंगा। देखिए, जो अभी हमारी बातचीत हो रही है वो इम्यून सिस्टम की हो रही है। तो इम्यून सिस्टम स्ट्रेस को प्रभावित करता है और स्ट्रेस के कारण डिजीज के होने की संभावना होती है, पहली बात। अब प्रश्न है कि हम अपने इम्यून सिस्टम को अब इनहेंस कैसे करें, दिस इज द क्वेश्चन। अब हम सब जानते हैं कि आज बहुत सारी चीजें बताई जा रही हैं कि जिससे हम इम्यून सिस्टम को इनहेंस कर सकें। वो आयुर्वेद की भी चीजें हैं, विटामिन और तमाम न्यूट्रिशन, मैं उन चीजों में नहीं जाना चाहता, लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहूंगा कि लोग उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करें और दे हैव टू टेलर दोज थिंग्स अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स, कि अपनी आवश्यकता अनुसार जरूरी नहीं कि सब चीजें वो खाए पिए, लेकिन ये देखें कि जितने भी तरह की चीजें हैं उन सब में से कुछ न कुछ मिला के, और वो जो ट्रेडिशनल चीजें हैं जिनको कि हम आयुर्वेद के लिए कहता रहा है, हम लेते रहे हैं, उनको लें। तो ये तो एवरीबडी नोज। लेकिन मैं दूसरी बात करना चाहूँगा, वो ये है कि साइकोलॉजिकल इम्यून सिस्टम भी होता है। तो दैट व्हाट इज द साइकोलॉजिकल इम्यून सिस्टम, ये कॉन्सेप्ट बहुत प्रचलित नहीं है, लेकिन मैं इसको बात में इस पे कर रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि स्ट्रेस के लिए जो इंटरवेंशन स्ट्रेटजीज हैं, इनमें मैंने कहा था कि हमारी बातचीत टाटा के इर्द गिर्द होगी कि दिस इज ए ईयर टू लिव, यह जिंदा रहने का साल है। इसमें मैं ये जोड़ना चाहूंगा कि टू लिव एंड लेट अदर लिव। अगर हम चीजों को दूसरे लोगों से ज्यादा अच्छी तरह समझ रहे हैं, अपना बचाव कर पा रहे हैं,
हम एक सेफ इन्वायरमेंट पर रह रहे हैं तो हमें दूसरों के लिए भी सोचना चाहिए। और जब हम दूसरों के बारे में सोचना शुरू करते हैं तो जो चीजें हमारे सामने आती हैं वो हैं परोपकार, दया, करुणा, सहयोग। तो मैं ये जो सारी चीजें हैं ये साइकोलॉजिकल इम्यून सिस्टम को बढ़ाती है, हमारी हैप्पीनेस को बढ़ाती हैं। और जब हम दूसरों को सहयोग करते हैं, जब जिन लोगों को खाना नहीं मिल रहा है उनको किसी तरह से हम खाना पहुंचाते हैं, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट उनपे हम उनको सपोर्ट करते हैं। जो लोग एजेड हैं और उनको उनकी आवश्यकताएं पूरी नहीं हो रही है उनको हम सपोर्ट कर रहे हैं वॉलंटियर्स के थ्रू अगर हम करते हैं। या सबसे बड़ी समस्या आज हमारी कोरोना वॉरियर्स के लिए भी है। आज हमारे डॉक्टर्स इन्फेक्टेड हो रहे हैं, डॉक्टर्स अपने घर नहीं जा पा रहे हैं और घर जाते हैं तो घर वाले उनको देखते नहीं हैं। तो उनकी जो आवश्यकता है, जो पुलिस के लोग जो काम करते हैं, जो नगर पालिका के जो स्वीपर्स हैं, आज हमारे यहाँ नगर पालिका के स्वीपर्स और डॉक्टर्स ये तब हो रहे हैं। हमारे आज सागर में 5-6 लोग ऐसे ही संक्रमित है। तो इन लोगों को हमें सपोर्ट करना होगा, इनकी फैमिली को सपोर्ट करना होगा, इनकी मॉरल बूस्टिंग करनी होगी और इसी के साथ साथ जो लोग और सफर कर रहे हैं उनको सहयोग करना होगा। तो ये इससे होगा ये कि जो पॉजिटिव हमारे इमोशंस हैं, दया, करुणा, परोपकार, जब हम इसमें लगते हैं और इसमें हमें बच्चों को भी इन्वॉल्व करना चाहिए, हमें पूरे परिवार को इन्वॉल्व करना चाहिए। तो इससे बच्चे स्ट्रेस से बचेंगे भी। हम बच्चों से कह सकते हैं कि हमारे ऐसे लोग हैं जो कि गरीब परिवार हैं, जो कोई बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, उनके लिए खिलौने उनके पास नहीं है, अगर तुम अपने खिलौने कुछ उनको दे दो और तो बच्चे तैयार हो जाएंगे कि हाँ, क्योंकि वो बाहर भी नहीं निकल पा रहे हो, तुम्हारे तरह के बच्चे हैं। तो बच्चे को अगर कोऑपरेट करें तो उनमें भी एक सहयोग की भावना आएगी। अगर हम लोग इवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव से बात करें तो देखिए, जो खुशी है वो हमारे कोर में है। और जैसे हमारे कोर में एटम्स कोर में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं और जो दूसरे पार्टिकल्स हैं वो उसके आसपास घूमते हैं, ठीक वैसे ही जो हैप्पीनेस है वो हमारे कोर में है। और हैप्पीनेस के कारण ही, पॉजिटिव इमोशंस के कारण ही हम एग्जिस्ट कर पाए हैं। जबकि जो तो नेगेटिव इमोशंस हैं ये हमारी संवेदनाओं को गहराई देते हैं दूसरों को समझने में, लेकिन जो पॉजिटिव इमोशंस हैं, जो परोपकार और करुणा और हैप्पीनेस है, ये हमारी संवेदनाओं को विस्तार देता है। तो जब हम परोपकार और इस तरह की चीजों में करेंगे, सहयोग करेंगे, लेट अदर लीव की भावना अगर हमें आएगी कि दूसरे को हम कैसे जिंदा रखने में, जीवितता में, उनको इस भय से मुक्त करने में यदि हम मदद करें तो इस सिचुएशन में हमारा साइकोलॉजिकल इम्यून सिस्टम हमारा तो बूस्टअप होगा ही, सोसाइटी का भी इम्यून सिस्टम होगा। तीसरी बात जो आज इस पे रिसर्चेज भी हो रही है और मैं साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स को ये नई बात है वो है कि ये भी कि ये टर्म तो प्रचलित हो रहा है, बिहेवियरल इम्यून सिस्टम, कि जब इस तरह की अनसर्टेनिटी की सिचुएशन होती है तो लोग, मैं कोविड के रेस्पेक्ट में बात कर रही हूँ, कि लोग कन्फॉर्मिस्ट हो जाते हैं। आज सब लोग चाह रहे हैं कि मास्क लगाएं, आज सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी हो रहा है और 130 करोड़ के देश में कोई ऐसा स्ट्राइक नहीं हुआ कि लॉकडाउन को तत्काल खोल दिया जाए। ये क्या है? ये बता रहा है कि ऐसी सिचुएशन में हम कन्फॉर्मिस्ट होते हैं, ओबीडियंट होते हैं और अथॉरिटीज की बात को हम मानते हैं। लेकिन इसका एक और एस्पेक्ट भी है जो हमने दिल्ली में देखा, जो बॉम्बे में हमने देखा, कि जो मजदूर हैं उनको जो सोशल सपोर्ट मिलना चाहिए था वो इस वजह से नहीं मिला कि वहाँ के लोग ये समझ रहे थे कि ये अगर रहेंगे तो ये एलियन होंगे, इन लोगों के थ्रू शायद बॉम्बे में कोरोना न फैल जाए। तो कहीं ना कहीं से कम्युनिकेट कराया गया था कि बॉम्बे छोड़ो। तो उनको जो एक कंसोलेशन मिलना चाहिए था, एक सोशल सपोर्ट सोसाइटी को मिलना चाहिए था। इन पे स्टडीज हो रही है कि हम दूसरे रेस के लोगों को, दूसरे रीजन के लोगों को एलियन समझते हैं और उनके प्रति हमारा व्यवहार जो है वो डिस्क्रिमिनेटरी होता है। तो ये बिहेवियरल इम्यून सिस्टम, इस बात को हमें समझने की जरूरत है कि ये स्वाभाविक है।
आज आप देखिए कि ये अकस्मात नहीं है कि अमेरिका में जो एक ब्लैक को पुलिस ने मारा है, ये घटना बहुत दुखद है, नहीं होनी चाहिए, ये जघन्य है। लेकिन इतना बड़ा आंदोलन वहां इस वजह से हुआ कि स्ट्रेस आउटबर्स्ट कर गया, जो स्ट्रेस सिमर कर रहा था वो आउटबर्स्ट हो गया। तो देखिए ये बिहेवियरल इम्यून सिस्टम की चीज है। लेकिन इसका एक नेगेटिव एस्पेक्ट है जो मैं कोविड के संदर्भ में आपको बताना चाहूंगा कि अगर हम बहुत कंफॉर्मिस्ट हो गए तो हम क्रिएटिव ढंग से नहीं सोच सकेंगे। तो हमको कोरोना में क्रिएटिव ढंग से सोचना भी है, तो इसके लिए हमें मानना चाहिए कि ये कहीं ना कहीं हमें कंफॉर्मिस्ट बना रहा है, तो हमारी जो क्रिएटिविटी है वो खत्म ना हो। तो इस क्रिएटिविटी को खत्म ना करने के लिए हमको इस पे सजग होना चाहिए कि केवल हम कंफॉर्मिस्ट ही ना हो, हम क्रिएटिव ढंग से सोचते रहें। आज बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज जो कोरोना के कारण अपॉर्चुनिटीज भी मिल रही हैं, अपॉर्चुनिटीज भी आ रही हैं कि जैसे कि स्कूल्स बंद रहेंगे, पेरेंट्स काम पे जाएंगे, बच्चों का होमवर्क कौन करेगा, तो ऑनलाइन ट्यूटर का एक बहुत बड़ा मार्केट होने जा रहा है। मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, ऐसे देयर आर मेनी एवेन्यूज व्हिच आर लाइकली टू ओपन इन दिस कोरोना एज। तो ये चीज है। इसी के साथ साथ कुछ और अपॉर्चुनिटी है कि ये जो कोरोना वायरस है, इसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू और हम ये तमाम जो एप्स हैं इनके थ्रू में कभी पहली बार ही मैं इससे परिचित हुआ हूँ। जबकि यूनिवर्सिटी बंद हो गई और बच्चों को पढ़ाना था, तब हम लोगों ने एक्सप्लोर किया कि कैसे पढ़ाएं। तो एक डिजिटल डिवाइड हो रहा है, एक बहुत सारा वो जनरेशन है जो इन चीजों को, डिजिटल लिटरेसी जिनमें नहीं है। नई जनरेशन तो डिजिटल से भी है, टेक से भी है, लेकिन एक बहुत बड़ा जो जनरेशन है जो इन चीजों को नहीं जानता है, वो अपने को एलियन महसूस कर रहा है। तो वो उनको ये लगता है कि अब हम कैसे लोगों से कनेक्ट होंगे, तो उनको हम कैसे लिटरेट बनाएं, ये भी एक सोशल सर्विस आज है। जो ओल्ड एज के लोगों को और इस सर्विस में हो सकता है कुछ अर्निंग भी हो, तो हम सोशल सर्विस के लिए अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम इस तरह की चीजों की बातचीत कर सकते हैं। तो ये हमारे कुछ इश्यूज हैं जिन पे हमने बात करने की कोशिश की। अब इसके बाद हम आ रहे हैं कि किस तरह की कोपिंग स्ट्रेटजीज इस मेंटल हेल्थ के दौरान हम अपनाएं। तो देखिए, और कौन सी कोपिंग स्ट्रेटजीज इफेक्टिव हो सकती है स्ट्रेस के संदर्भ में और मेंटल हेल्थ के संदर्भ में, मैं इसकी चर्चा करूँ। देखिए, सबसे पहले जो कोपिंग होती है वो डायरेक्ट कोपिंग होती है। डायरेक्ट कोपिंग में हम ये जानते हैं कि जो आज कोरोना के संदर्भ में जो भी मेडिकल रेजिमेंट, मेडिकल एडवाइस है, चाहे वो मास्क लगाना हो, चाहे सोशल डिस्टेंसिंग हो, हम इनका पालन करें। इसी के साथ साथ लेकिन इसके सिम्टम्स ही तय नहीं है। लोगों में डिबेट है कि ये सिम्टम्स है, कौन सा सिम्टम्स है, कौन सा सिम्टम्स नहीं है, कौन सा सिम्टम्स ज्यादा सीरियस है। तो हमको इसके लिए सोशल सपोर्ट कोपिंग की जरूरत है कि हम, इंफॉर्मेशन तो बहुत है, देयर आर एबंडेंस ऑफ इंफॉर्मेशंस, बट देयर इज लैक ऑफ राइट इंफॉर्मेशंस। तो जो लोग समझदार हैं वो राइट इंफॉर्मेशन को सेलेक्ट करें और डिसिमिनेट करें। दूसरी जो सोशल सपोर्ट हो सकता है वो सोशल सपोर्ट फॉर इंस्ट्रूमेंटल रीजन, कि हम हेल्पफुल हो सकें। हम इसके लिए हमें ये करना होगा कि हमें जो रिसोर्सेज हैं, हम उन्हें, उन रिसोर्सेज को पता करना होगा कि भाई किसी भी इमरजेंसी की सिचुएशन में जो एम्बुलेंस है वो कहाँ कहाँ अवेलेबल है। 108 अगर नहीं अवेलेबल है तो कहाँ बेड अवेलेबल है, किस डॉक्टर्स को हम कांटेक्ट करें। तो ये इन्फॉर्मेशन हम अपने पास रखें और सोशल सपोर्ट, हम एक नेटवर्क बनाए जिनके थ्रू हम सोशल सपोर्ट दे सकें। तीसरे प्रकार की जो सोशल है कि वो एक जो कोपिंग स्ट्रेटजी है वो डिनायल भी है कि हम
कुछ चीजों को थोड़ा थोड़ा सा डिनाई करना भी सीखे, नहीं तो सब हमें हो रहा है, हम बीमार पड़ जाएंगे, ऐसा नहीं है। हमें ये भी होना चाहिए कि नो, हम आई एम प्रैक्टिसिंग ऑल द मेडिकल रेजिमेंट, आई एम वेल कनेक्टेड टू सोसाइटी, हम समाज से जुड़े हैं, हमारे अच्छे मित्र हैं, हमारे लोग परिचित हैं जो किसी भी मौके पर हमारा सपोर्ट करेंगे। तो हम अगर ये भावना में है तो कुछ सर्टन सीमा तक हम डिनाई भी कर सकते हैं कि नहीं ये बीमारी हमको नहीं होगी, बट एट द सेम टाइम वी शुड नॉट हैव ऑप्टिमिस्टिक बायस, हम रियलिस्टिक अप्रेजल भी करते रहें। इसी के साथ साथ देखिए हमको सप्रेशन ऑफ कॉम्पिटिंग एक्टिविटीज, अब आज बाजार खुल रहा है तो हम कहेंगे कि अरे वो हमारा जो है पेन, आजकल हमारे पास नए स्टाइल का पेन नहीं है, बहुत पुराने पेन हो गए, तो अब पेन लेने हम जाएं। हम कुछ ऐसी चीजें जो हमें आज उसकी बिल्कुल जरूरत नहीं है, लेकिन कहे कि नहीं नहीं ये बहुत दिन हो गए टी शर्ट यही पहनते हुए, तो नए कपड़े जाके पहने, तो ये समय उसका नहीं है। लॉकडाउन पूरी तरह समय नहीं हुआ है, तो आज वी हैव टू डिस्टिंग्विश बिटवीन विशेज एंड नीड, कि हमारी आवश्यकताएं क्या है और वास्तव में हमारी नीड क्या है, ये आज हमको डिस्टिंग्विश करना है। तो हम ये इसी तरह से और भी जो कॉम्पिटिंग एक्टिविटीज है, क्लब जाना कि नहीं भाई वो जिम तो खुलने लगा है, 2 लोगों के 3 लोगों के साथ जिम भी जरूर जाना चाहिए। तो देखिए हमको डिसाइड करना है, होटल में खाना भी हमको डिसाइड कर, तो सप्रेशन ऑफ कॉम्पिटिंग एक्टिविटी जो हमें मेडिकल रेजिमेंट जो कह रहा है, उनके साथ जो दूसरी चीजें हैं उनको हमें सप्रेस करना चाहिए। और नेक्स्ट जो हमारी कोपिंग एक्टिविटीज है वो है कि फाइंडिंग पॉजिटिव मीनिंग। हर आपदा कुछ न कुछ सिखाती है, ये आपदा हमें सिखा रही है कि हम कैसे चीजों का सकारात्मक अर्थ लें। आज जो रिश्ते थे, प्रेम, सहयोग, दया, करुणा, ये कुछ औपचारिक शब्द रह गए थे। धन्यवाद, कृतज्ञता ज्ञापन करना, ऐसा लगता था कि हम गले के ऊपर से कह रहे हैं कि हम कृतज्ञता ज्ञापन करते हैं, मतलब कह रहे हैं, बहुत गहराई से नहीं कह रहे हैं। लेकिन आज जिस तरह से लोग एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, एक दूसरे का वो सहयोग कर रहे हैं, दया की भावना के साथ, करुणा की भावना के साथ, प्रेम की भावना के साथ, तो आज इन शब्दों के वास्तविक अर्थ को हम समझ रहे हैं। आज हम सहयोग का अर्थ समझ रहे हैं। आज ये संयोग है कि मैं देख पा रहा हूं कि जो देश में एकता 1962 में थी, जबकि हम लोग बचपन में गाना सुना करते थे कि 40 करोड़ों को हिमालय ने पुकारा, तो आज वो समय है जो हम देख रहे हैं कि 130 करोड़ लोगों को देश ने पुकारा कि हम सहयोग की भावना से काम करें। तो वी हैव टू फाइंड पॉजिटिव मीनिंग इन दिस सिचुएशन। तो इसी प्रकार से हमें चीजों को पॉजिटिव इंटरप्रिटेशन करना है, और ये जो पॉजिटिव इंटरप्रिटेशन है ये कहीं ना कहीं हमको ग्रोथ की ओर ले जाएगा। सब बिहेवियरल डिसएंगेजमेंट भी कोपिंग स्ट्रेटजीज है जिसके थ्रू हम अपना मेंटल हेल्थ को हम कर सकते हैं कि भाई हम बोर हो जा रहे हैं कि अब क्या करें। तो ऐसे में देखिए कि हम वॉक कर सकते हैं, कुछ लोगों को डांस का शौक है तो आज कोई नहीं है कमरे पे आप डांस कर सकते हैं। तमाम तरह की जो है, तो ये बिहेवियरल जो चीजें हैं वो डिसएंगेजमेंट की, खाली दिन भर टीवी देखने के अलावा हम लंबा, अगर अकेले जब 4 बजे हम वॉक, अगर नींद टूट गई, स्ट्रेस हो रहा है तो हम वॉक करने निकल जाएं, या शाम रात को जब कोई नहीं है तो हम वॉक, अगर जगह है तो हम वॉक करने निकल जाएं, या किसी ऐसी फिजिकल एक्टिविटीज में, एक्सरसाइज में, जिम में, या और भी सूर्य नमस्कार हम 20 करते थे आज नहीं कर पा रहे हैं उनको करें। तो ये बिहेवियरल डिसएंगेजमेंट है। इसी के साथ साथ मेंटल डिसएंगेजमेंट है, ये मैंने खुद प्रैक्टिस किया। मैं दिन भर वही कोरोना के साथ न्यूज देख रहा था, तो मैं कुछ मुझे लगा कि नहीं, कुछ मेंटल एनर्जी की, हमारे मेंटल रिसोर्सेज हमारे डिप्लीट हो रहे हैं, दे आर ड्रेन्ड आउट। तो मुझे याद आया कि रश्मि रथी किताब मुझे बड़ी अच्छी लगती थी, उसकी कुछ चीजें, और अब रश्मि रथी मेरे पास थी नहीं, लेकिन ड्यू टू डिजिटल एज आई गॉट इट। और मुझे जो उसकी पंक्तियां जो मिला कि खम ठोक ठेलता है जब नर जाने जाते पर्वत के पांव, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। तो मुझे लगे नहीं, जब पूरा संसार इसके लिए लड़ रहा है, हमारा पूरा देश एक साथ खड़ा है, तो वी शैल ओवरकम।
हमारी लगता है मुझे याद आई कि हम लोग इसमें जीतेंगे और जीत के रहेंगे। तो ये जो हमारी भावना है, ये इस हमारी भावना को हमें कायम रखना है और हमें देश के लिए आगे कुछ चीजें। अब मैं पोस्ट चूंकि कोविड में सर आवाज आ रही मेरी? हाँ बस सर हाँ मैं समझ कर रहा हूँ। हाँ जी जी दो तीन ठीक है, हेलो ठीक है हाँ सर, मैं आप हाँ मैं समझ कर रहा हूँ 5 मिनट, ठीक है। ठीक हेलो है सर, ठीक। हाँ, जी ओके, सर, आप 2-4 मिनट हाँ, कर लें सर। ठीक। तो कुछ चीजें ये कि पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, अगर ये कोरोना पीरियड में, हालांकि मैं अभी वहां तक पहुंच नहीं पा रहा हूँ, लेकिन पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर की संभावनाएं हैं। इसमें हम लोग एक कॉग्निटिव डिसोनेंस थ्योरी होती है कि ये कॉग्निटिव डिसोनेंस हो सकता है कि देखिए मैं बच तो गया, लेकिन ये डिजीज ऐसी है कि इसमें सबको कभी न कभी शिकार होना है, तो हो सकता है ये फिर मुझे हो। तो इस डिसोनेंस के कारण कभी ऐसा होगा कि हमें हल्का सा बुखार भी हो जाएगा, कहेंगे देखो अब कोरोना हो गया। कि एक तो पर्सनल फैक्ट हो गया। दूसरी बात ये है कि इसके रिकरेंस होती हैं, जो बार बार जब चीजें आएंगी, जो इसकी स्मृतियां आएंगी। पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर की बात अभी हुई थी लेकिन इसके लिए हमें तैयार होना चाहिए कि हम कैसे कोपिंग करें। तो ये मुझे लग रहा है कि हो गया। मैं महात्मा गांधी काशी विश्वविद्यालय के और सभी आयोजकों का तो साधुवाद देता हूं कि उन्होंने इस कार्यक्रम का आयोजन किया और ये कहने का मौका दिया। धन्यवाद जी और सबको। आर.के. सिंह जी। बैकग्राउंड आवाज। सर आपने बहुत कम समय में और अपने सालों के अनुभव और इस दौरान जो आपने अनुभव किया और साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से जिस तरह से आपने उन चीज़ों को रखा, मुझे लगता है कि बहुत ही आई ओपनिंग और बहुत ही इंसाइटफुल हम सब के लिए है। और हमारे पास ये एक निधि के तौर पर आपकी आज की रिकॉर्डिंग रहेगी, जिसको हम लोग बार बार सुनेंगे और कोशिश करेंगे कि उससे जितना कुछ सीख सकें और उसके आधार पर हम कुछ इंटरवेंशंस अपने यहाँ भी प्लान कर सकें। थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। नाउ वी हैव आवर गेस्ट ऑफ ऑनर प्रोफेसर R.N. Singh sir in the panel. Professor R.N. Singh sir was a former professor in Department of Psychology, Banaras Hindu University. He is the founder of Bharatiya Manovigyanik Parishad. So without taking any more time, I directly request Professor R.N. Singh sir, if I am audible to you sir, please open your, okay. Sir, please start your address. Professor R.N. Singh sir. R.N. Singh साहब नमस्कार। बोलिए। हाँ सर, आप प्लीज हेलो सर। जी हाँ, आई एम ऑडिबल। जी सर, जी सर। नमस्कार सिंह। आई एम ऑडिबल। यस सर। ओह थैंक यू वेरी मच। हेलो। Yes sir, please start sir. Oh yes. Thank you to each and everybody, especially the members of the managing committee, to invite me to share my views with the members about COVID-19. Dear friends, so many aspects have been covered. Within 2 days, about effects of COVID-19 pre and post, especially that I wish what is our comparative position
regarding the requirement to meet the epidemic crisis and the resources which are in our possession. So, from this point of view, I will like to say that the Indian scenario, from the point of view to face the corona crisis, is not very satisfactory. This pandemic has taken in grip the whole world. So our country cannot be an exception to it. Lakhs of people are migrating from one place to another. And many lakhs people are confined to hospitals, beds, and isolation centers. Actually, in our country, the scenario of facing the epidemic is not very poor, is not well strengthened. You see, there are so many offices, there are so many agencies and systems to face the challenges caused by the nature or by any other virus from time to time. But it is the poor figure in our country that the systems which are dealing with the epidemic or epidemic consequences are not interrelated. हटा दो यार सर म्यूट हो जा रहा है सर ये यार इसको खोल रहे हैं क्या कर रहे हैं हेलो हाँ सर आवाज आ रही है वीडियो हाँ या हाँ ये पता नहीं यार ये वीडियो सर बंद किया है इससे ऑडियो आपका नहीं आ रहा है इसके लिए नहीं ठीक थैंक यू हाँ प्लीज So, my dear friends, I want to say that there is a lack of cooperation between the different agencies in our country to face the corona crisis or any other crisis like this. And besides this, if we compare ourselves from the Western countries, we find that there is acute shortage of professionals in our country to meet the psychological demands of the people in the days of crisis. It is a very big problem. And whenever the agencies are organized, constituted in our country, there is a general tendency to avoid the social workers, to avoid the psychologists, to avoid the psychiatrists from offering their services for the welfare of the people, for their well-being and for their satisfaction. So our efforts should be organized, but unfortunately it is scattered. And because of the scattered efforts, we often find ourselves unable to meet the crisis when it is required. And as we see, lack of coordination between the agencies, hospital, community centers, psychologists, and other professionals, this lack of coordination causes a big problem, and we don't find ourselves in position to utilize even the resources which are available at present with us. Actually, there is a need to organize the teams of different caliber, of different professions, which can meet the distress and emotional problem in the people of the country. And one thing more that I would like to attract your attention is that we should develop a global response system, not national response system, state response system. Our response system should be global. Wherever the problem is, we should make united effort to meet the people, to console them, to satisfy them. If we are with you, we support you, our empathies are with you, and we are here to help you. Please share your feelings. So if we find ourselves in such a situation, so certainly it would be a good achievement for us to meet the epidemic, whether it is corona caused or any other epidemic,
that may happen in future. May God keep such thing should not happen. So we have to select volunteers having very high involvement, and we have to improve our screening system. The present intervention system in our country is not very satisfactory. Agencies make efforts on a scattered level. There is no organized effort in our country. So it is the need of the hour that we should extend more psychological support to those who are working on the front line. The frontline workers, caregivers, should be supported by the second or third line workers like the psychologists and other caregivers. So, my dear friends, all these things, if we make a united effort, so we shall be in position to meet any problem, any distress, any despair in the country or in the world. But scenario is not very good. We have to do a lot of efforts in this direction. Only then we shall be in position to face the epidemic, whether it is the epidemic at present known as C19 or any other future crisis. So crisis intervention is the need of the hour, and we should prepare a national level team, coordinated team. So many universities, NGOs and agencies are conducting programs, but there is lack of coordination. And all these efforts made by us, we are not properly considered by the government or administrative agencies. It is also one of the tariff figure of the country. Should be reconsidered. The professionals, the psychologists, social workers should be given due opportunity, proper opportunity to interact with the patients, to interact with the frontline workers for the better results. Thank you very much. Thank you so much, sir. Hello. Yes, sir. Thank you so much, sir. Thank you. Thank you very much to give me an opportunity to share my views with you, and hope all the best. Thank you, sir. Thank you, sir. Next, I would like to request our Honorable Vice Chancellor, sir, Professor T.N. Singh, for his presidential remark. Sir, I'm audible to you, sir? Hello. Yes, sir. You're audible, sir. So we look forward for you. इस अंतिम सत्र के हमारे अतिथि और वक्ता प्रोफेसर पीके राय साहब, प्रोफेसर आर.एन. सिंह जी, and many other eminent speakers who have spoken in the previous session also from Sri Lanka and other places. जो आपका विषय है मेंटल हेल्थ, उसके बारे में तो आज जो मेंटल हेल्थ की स्थिति है कोरोना के कारण, लेकिन उसके पहले भी मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा अच्छी स्थिति नहीं थी, क्योंकि यदि आप आंकड़ों को देखें तो भारतवर्ष में 40 सेकंड में एक सुसाइड, अमेरिका में 14 सेकंड में एक सुसाइड, इस तरह का रेट दिखाया गया है आपके विभिन्न विद्वानों के द्वारा। और भारतवर्ष में अनुमानित 15 करोड़ लोग मानसिक रूप से, आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से पीड़ित माने जाते हैं। करीब करीब 2.7% लोगों को मानसिक रोग से पीड़ित हैं। ये आंकड़े जो है जो बता रहे हैं हमको, ये तो मुझे लगता है कि करीब करीब डिप्रेशन के शिकार की संख्या भारतवर्ष में 5 करोड़ है। ये मैं कोरोना पूर्व की बातें कर रहा हूं। कोरोना ने उसमें
एक बहुत बड़ा योगदान दिया और उसमें बहुत ज्यादा संख्या में लोग पीड़ित हो गए। अभी किस तरह से लोगों को, अभी तो काढ़ा पिला करके तो आप शारीरिक हेल्थ तो बनाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन मानसिक स्वास्थ्य को कैसे ठीक किया जाए, उसमें किस तरह से आप गति ले आए, ये एक चिंतनीय विषय है। और आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने, अभी प्रोफेसर पीके राय साहब ने बताया बहुत सारे उपाय, प्रोफेसर आर.एन. सिंह ने बताया कि वी डोंट हैव दिस एनफ clinical psychologists who can tackle this problem in the greater extent. Less trained people are there. लेकिन जहां पे ज्यादा संख्या में ट्रेंड पीपल है, वहां का भी मानसिक स्वास्थ्य तो बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है। जो हम टीवी पे देख रहे हैं और जो रिपोर्टें आ रही, और पीके राय साहब ने उसको इंगित भी किया, that is not very encouraging। तो बड़ा डिजास्टरस मेंटल हेल्थ है वहां का, जहां पे ज्यादा क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट से लेकर के और क्लिनिकल व्यवस्था बहुत सुदृढ़ और समृद्ध मानी जाती है, वहां का भी मेंटल हेल्थ तो नजर नहीं आ रहा है बहुत अच्छा। तो ये आप सारे लोगों के लिए बहुत बड़ा चुनौती है, क्योंकि यदि 2.7% आबादी डिप्रेशन में रहे तो उस देश का स्वास्थ्य तो बहुत अच्छा नहीं कहा जाए। अब उसमें से 5.2% लोग ऐसे हैं जो कभी न कभी डिप्रेशन के शिकार रहे। कोरोना ने उसमें इजाफा ही किया है, कमी तो किया नहीं। मुझे पता नहीं कि ये आंकड़े जो 40 सेकेंड वाले हैं वो कोरोना में भी चल रहे हैं क्या, उनमें कुछ कमी आई है, कुछ ठहराव आया है, ये तो आप लोग सारे विद्वान हैं इस विषय के, ये बताएंगे, मुझे इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं। लेकिन एक आम आदमी होने के कारण ये जो सारी चीजें आ रही हैं, ये जो निकल रहा है कि किस तरह के जो डॉक्टरों की आवश्यकता है, उसमें से भारत में तो आप जानते हैं ऐसे भी डॉक्टरों की कमी है। 10 आदमी में से 1 आदमी को स्वास्थ्य के लिए डॉक्टर उपलब्ध हो जाए तो बड़ी अच्छी बात है। और आज ये संक्रमण का जो समय है, इसके अंदर तो और भी कमी आ गई है, क्योंकि बहुत सारे प्राइवेट जो नर्सिंग होम है, जो प्राइवेट क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, वो सारे लोगों की तो जो प्रैक्टिस है उन पे तो प्रतिबंध ही है, क्योंकि वो खोल नहीं सकते, केवल सरकारी खुली हुई है। और उनकी दिशा और दशा दोनों चिंतनीय है। इससे बड़ा मेंटल हेल्थ और क्या खराब हो सकता है कि किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री कहे कि आप अब राम के भरोसे रहिए, जगह नहीं है हॉस्पिटल में। ये बड़ा ही विषम परिस्थिति है। और इस विषम परिस्थिति में किस तरह से लोगों को, क्योंकि जब हम स्वास्थ्य की बात करते हैं तो केवल शारीरिक स्वास्थ्य से नहीं है, मानसिक स्वास्थ्य भी बहुत बड़ा है, क्योंकि मानसिक रूप से यदि स्वस्थ रहेंगे तो शरीर भी स्वस्थ रहेगा। दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, उनको अलग अलग दृष्टि से नहीं देना चाहिए, क्योंकि स्वस्थ का मतलब है कि फिजिकली एंड मेंटली दोनों साउंड होना चाहिए। और ये संक्रमण के समय में मुझे लगता है डिप्रेशन के शिकार लोगों की संख्या बढ़ रही है। आरंभ में डॉक्टर राजेंद्र सिंह ने बताया कि कई लोग जो है सुसाइड कर रहे हैं, और सुसाइड का कारण उनको लगता है कि कोरोना के बाद जो है विश्व में कुछ बचेगा नहीं उन्हें करने के लिए। तो इस तरह की मानसिकता को किस तरह से बदला जाए, क्योंकि खास करके पूर्वी उत्तर प्रदेश में
मुझे लगता है कि मानसिकता बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह। मेंटल जो थिंकिंग है वो कहीं ना कहीं से ग्रसित है, और इसी के कारण से आप देख रहे हैं कि लगातार हर दिन कुछ न कुछ अखबारों में इस तरह के रिपोर्टें आ रही है कि हर दिन कोई सुसाइड कर रहा है। अब आप इतनी छोटी बातों के लिए तो हमें पता नहीं कि मोबाइल यूज नहीं करने दे रहा है या भाई ने बहन को मोबाइल यूज करने से रोका, और इस बात को लेकर के कोई सुसाइड कर ले, तो मुझे लगता है कि वो पहले से ही वो आदमी मानसिक रूप से बीमार रहा होगा, क्योंकि ये कोई ऐसी बात नहीं है जिसको लेकर के इतना बड़ा निर्णय लिया जाए कि हमें क्या मोबाइल के बगैर जिंदगी नहीं है क्या। तो ऐसा सोच क्यों आ रहा है, इस पे आप लोगों को थोड़ा सा रिसर्च करना चाहिए। क्या गुड डेवलपमेंट और गुड हेल्थ का जो कंसेप्ट है उसके बारे में भी आप सारे लोगों को सोचना चाहिए कि किस तरह से इसको जो है सोशल टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट का जो मॉडल हम बोलते हैं वो किस तरह से आगे बढ़े। ये ऐसा नहीं है कि केवल जो है कम पढ़े और अधिक पढ़े लोगों में अलग अलग विभेद है। डिप्रेशन के शिकार हर तरह जगह के लोग मिलते हैं, वो उच्च संस्थान हो, सामान्य संस्थान हो, या जो नहीं पढ़ते हैं उनमें, तो ये सभी में क्यों पाया जाता है? क्योंकि यदि पढ़ने के बाद भी, लिखने के बाद भी, जानकार होने के बाद भी आपके मन में इस तरह से चीजें आती हैं, तो लोगों को बड़ा ही मतलब उदासीन जो है रवैया लोगों ने जीवन के प्रति अपनाया है, मुझे लगता है इसके कारण से ये सब सारी चीजें हो रही। आप लोगों को उसके लिए सोचना चाहिए कि किस तरह से डिप्रेशन से शिकार लोगों को आप किस तरह से उनको आगे लेके आए, क्योंकि ये जो बात है मेंटल डिप्रेशन की, इसको कभी खुल के कोई बात नहीं करता, बड़ा छिपा के रखते हैं लोग, और इसमें परिवारों का भी दोष है, व्यक्ति का तो है ही है क्योंकि वो शिकार है, वो भी स्वीकार नहीं करता, लेकिन कम से कम उनके जो परिवार है वो भी मानसिक सेहत के बारे में पता नहीं क्यों इसको छुपा के रखते हैं, और जब बढ़ जाती है संख्या तब जाकर के लोग जो है सोचते हैं कि ये जो है चीज ऐसी हो गई तो हमें इसके लिए क्या करना। तो ये जो सारी समस्याएं हैं, आप निश्चित तौर से आपके 2 दिन के इस वेबिनार में आपने बहुत सारी समस्याओं के ऊपर चर्चा की होगी, और इस चर्चा में आपने बहुत ही अच्छे विचार भी आए, क्योंकि मैं अभी राय साहब को और सिंह साहब को तो सुना कि आप किस तरह से मेंटली स्वस्थ रह सकते हैं, उसके लिए उन्होंने बताया कि भाई हाउ यू थिंक अबाउट योरसेल्फ, इसके बारे में विचार होना चाहिए। राइट डाउन समथिंग where you feel you are grateful, वो थोड़ा सा होना चाहिए कि ग्रेटिट्यूड होना चाहिए, करुणा होना चाहिए। उन्होंने कहा कि सारी चीजें तभी हैप्पीनेस आ सकती है। माइंडफुल ऑफ द प्रेजेंट मोमेंट, ये भी होना चाहिए। थोड़ी सी एक्सरसाइज जो है वो भी हर व्यक्ति को करनी चाहिए, बिकॉज दैट विल बी द स्ट्रेस रिलीविंग सिस्टम, जिससे कि आपको जो है शरीर और मानसिक दोनों रूप से बूस्टिंग होती है और आपका ऑक्सीजन इंटेक बढ़ जाता है। दैट विल रिमूव द एंटीडोट टू द स्ट्रेस, एंजाइटी एंड डिप्रेशन, ऐसा लोग बताते हैं और लोग करते भी हैं और इसका लाभ भी मिला है, तो उसको भी देखना चाहिए। जो कोरोना का एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है कि उसने जो है गुड मील और गुड फूड और डिसिप्लिन फूड के बारे में लोग जागृत हुए हैं, चिंतित हुए हैं कि किस तरह का खाना खाना चाहिए, किस तरह का खाना नहीं खाना चाहिए। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि कम से कम एक चीज तो लोगों ने सीखा कि खाने के बारे में डिसिप्लिन रहना चाहिए, समय पे खाइए, शुद्ध खाइए, उतना ही खाइए जितनी जरूरत है,
और उस तरह के खाना ना खाइए जो कि आने वाले दिन में आपको संकट में डाले। ये अच्छी बात है। कम से कम एक संवाद विहीनता नहीं होनी चाहिए। जो लोग कहते हैं, आप लोगों से ही हम लोगों ने सीखा है कि संवाद विहीनता जो नहीं होना चाहिए, वन शुड नॉट बी इन द आइसोलेशन ऑल द टाइम, तो वो होना चाहिए। और किसी दूसरे के लिए कुछ करने की चाहत रखनी चाहिए। थोड़ा बीच बीच में जो है मोनोटोनस लाइफ से ब्रेक भी लेना चाहिए। और मुझे लगता है कि जो समय से सोना, समय से उठना और समय से हर काम को करना, इसका मतलब है कि जो डिसिप्लिन लाइफ है उसमें जब डिस्टरबेंस होता है, हमारे किन्हीं कारणों से होता है, उसके कारण मुझे लगता है कि हम सभी को उसको जरूर में ध्यान में रखना चाहिए। क्योंकि एक बार आपने कोई चीज को डिरेल्ड की अपने सिस्टम को, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं से हम कुछ न कुछ इनवाइट कर रहे हैं ऐसे बैड एलिमेंट को हमारे बिहेवियर में, हमारे थिंकिंग में, हमारे बॉडी में, जो अनावश्यक रूप से आपके अंदर आता है और वो हमें संकट में डालता है। तो मैं तो कहूंगा कि जो भी हमारे विद्यार्थी जो सुन रहे हैं, जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, डोंट वेट, स्टार्ट गुड हैबिट फ्रॉम टुडे इटसेल्फ एंड बी रिलैक्स, बी रिलीव, we all have a stress free moment। कोई भी संकट आता है वो धीरे धीरे समाप्त होगा ही। क्योंकि हम लोग को ये कहा जाता है कि कोई भी ऐसा दिन नहीं है जिसमें कोई ना कोई चुनौती ना हो, और जिस जीवन में चुनौती ना हो वो जीवन भी क्या है। तो जो चुनौती आई है उसको डट करके मुकाबला करना चाहिए और उससे लड़ने की हिम्मत रखनी चाहिए। हिम्मत यदि आप में है तो बड़ी बड़ी जो है चुनौतियों को पार कर सकते हैं। और ये इसके तमाम उदाहरण हमारे इतिहास में भी है, हमारी संस्कृति में भी है और वर्तमान में भी। जज्बा होना चाहिए, जुनून होना चाहिए और वो सब पॉजिटिव होना चाहिए। कभी गिलास के आधे को मत देखिए, भरे को देखिए और उसमें आगे बढ़ने का प्रयास करिए। मुझे लगता है कि इस वेबिनार में आपने बहुत ही समसामयिक विषय के ऊपर आपने सारे व्याख्यान रखे और कल से आज तक मैं भी कई व्याख्यान, आज तो मैं 3 बजे से ही जुड़ा आपका सुन रहा था। तो जो विचार आए हैं बड़े ही अच्छे विचार हैं और मैं इसके लिए आपके विभागाध्यक्ष प्रोफेसर आरपी सिंह साहब, डॉक्टर दुर्गेश उपाध्याय जी, मुकेश पंत जी, राजेंद्र सिंह जी, रश्मि जी, संतोष जी, ये सारी जो आपकी टीम है, एनर्जेटिक टीम है, डेडिकेटेड टीम है, डिवोटेड टीम है, आप सारे लोग जो है धन्यवाद के पात्र हैं कि आपने इतने सुदूर सुदूर जगहों से इतने अच्छे अच्छे विद्वानों को एक साथ सबके सामने परोसा है, उनके विचारों को परोसा है। तो निश्चित तौर से हमारे विद्यार्थी, हमारे शोधार्थी और इससे जुड़े हुए अन्य सारे लोग इससे बहुत ही लाभान्वित हुए हैं। और कहीं ना कहीं से ये स्ट्रेस रिलीज सिस्टम जो आपने शुरू किया है, ये निश्चित रूप से हर आदमी के मानसिक तनाव को और शारीरिक थकान को दूर करने में ये वेबिनार सहायक रहा है। ये निश्चित तौर पे जिन्होंने सुना होगा उनको अनुभूति हुई होगी। मैंने चूंकि सुना है तो मैं अपनी व्यथा और अपनी जो अनुभूति, जो हमने इसको देखा, इसको सुनने से मुझे लाभ मिला, मैं उसका वर्णन कर रहा हूं। मैं आपका मनोवैज्ञानिक तो नहीं हूं और न मेरी उसमें विधा है, न कोई उसमें मेरा आधिपत्य है कि मैं इसमें अपने को हाथ डालूं। लेकिन एक लाभार्थी होने के कारण निश्चित तौर से आप सारे लोगों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं और आप सारे लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इसी उम्मीद के साथ कि आप अपने विभागाध्यक्ष महोदय के साथ सारे लोग मिल करके
कुछ और भी नए इस तरह के प्रोग्राम हमें करना चाहिए जिसमें समाज में जो डिप्रेशन के लोग हैं, कहीं ना कहीं से जिनमें कुंठा भरी हुई है, उनको कैसे हम समाप्त कर पाए, कैसे उसका निराकरण कर पाए, जिससे एक स्वस्थ और समृद्ध भारत की परिकल्पना जो है उसको पूर्ण किया जा सके। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी आयोजकों के प्रति एक बार बहुत बहुत साधुवाद, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और जितने भी हमारे बूढ़ी लोग आए हैं उनके प्रति भी मैं आभार और उनको साधुवाद देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। बहुत बहुत आभार सर आपका हम लोग के साथ जुड़ने के लिए, अपने आशीर्वचन के लिए। और पूरी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी ने डिसाइड किया है कि ये सारे रिकॉर्डिंग्स और प्रेजेंटेशंस को हम लोग कंपाइल करेंगे और एक बुकलेट के फॉर्म में ज़रूर इसको रिलीज किया जाए। जी बहुत अच्छा। सारे वीडियोस को यूट्यूब के माध्यम से लिंक्स हमारे वेबसाइट पे शेयर किए जाएंगे। सब हम लोगों ने निश्चित किया है और आगे की भी कार्य योजना हम लोगों ने बना रखी है। जैसे इसका जल्दी ही आपसे सर बात करेंगे। अब ज़्यादा समय न लेते हुए मैं अपने विभागाध्यक्ष प्रोफेसर राजेंद्र सिंह सर, सर आप अगर मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो कृपा करके आप वोट ऑफ थैंक्स दें। राजेंद्र सिंह सर, आपका ऑडियो सर म्यूट है। मेरी आवाज़ जा रही है सर? हरप्रीत सिंह सर, आवाज़ जा रही है मेरी? हाँ सर, आपका ऑडियो म्यूट है सर। जी सर, आप शुरू करें सर। इस सम्मान सत्र रहे हमारे विश्वविद्यालय के परम श्रद्धेय यशस्वी कुलपति प्रोफेसर टी.एन. सिंह जी, जिनके विषय में कहना अब हम लोगों के पास सब नहीं रहता है। आपकी सरलता, सज्जनता, आपकी कर्मठता, ईमानदारी, आपका व्यक्तित्व पूरा विद्यापीठ जानता है, हमेशा तारीफ करते हैं। और आपका हम इस वेबिनार को कराने में आपका विशेष सहयोग रहा है। आप हम लोग को उत्साहित करते रहते हैं, प्रेरित करते रहते हैं। इसके लिए हम मनोविज्ञान विभाग की तरफ से आपके प्रति धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। सर, जब से विद्यापीठ आए हैं हम समझ रहे हैं उत्तर प्रदेश में शायद इतना सेमिनार वेबिनार आयोजित नहीं हुआ होगा जितना कि महात्मा गांधी। तो ये हम मनोविज्ञान विभाग की तरफ से उनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं, धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। साथ ही साथ इस वेबिनार के चीफ गेस्ट और हमारे गुरु चीफ गेस्ट प्रोफेसर पी.के. राय जी, जो फार्मर हेड डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी हरि सिंह गौर सेंट्रल यूनिवर्सिटी सागर के रहे, उन्होंने अपना विचार इस वेबिनार में व्यक्त किया है, जिससे हम सारे लोग लाभान्वित हुए हैं। उन्होंने अपना अमूल्य समय इस वेबिनार के लिए दिया है। हम महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के मनोविज्ञान विभाग की तरफ से आपको सर धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। साथ ही साथ गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में
हमारे गुरु प्रोफेसर आर्यन सिंह, जो एक्स प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी रहे हैं। हम काशी विद्यापीठ मनोविज्ञान विभाग की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत एवं धन्यवाद, आपके प्रति धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। और मैं तो समझ रहा था कि सर कुछ हम लोगों को, आप मनोवैज्ञानिक ही नहीं है, आप हिंदी के एक तरह से कवि भी, साहित्यकार भी हम मानते हैं। कुछ अपने मुखारबिंद से हम लोगों को कोई कविता भी सुना देंगे, लेकिन साथ में आपने अपना संबोधन किया, हम इसके लिए आपके प्रति धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। साथ ही साथ वक्ता के रूप में हमारे बीच में डॉक्टर अनामिका वाजपेयी मिश्रा जी, जो यूएई से बिलोंग करती हैं। हेलो, आवाज जा रही? यूएई से बिलोंग करती हैं। उनका बहुत ही अच्छा लेक्चर रहा, जिससे हम सारे लोग लाभान्वित हुए हैं। जितने लोग कनेक्ट हैं, हम मनोविज्ञान विभाग की तरफ से आपके प्रति हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। साथ ही साथ डॉक्टर कलहरी पिटिगला, जो कि श्रीलंका से बिलोंग करती हैं, उन्होंने अपना विचार हम लोगों के बीच में दिया है और बहुत ही अच्छा उनका लेक्चर रहा है। हम मनोविज्ञान विभाग की तरफ से आपके प्रति धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। साथ ही साथ कल इनागरल के समय हमारे बीच में उपस्थित थे प्रोफेसर एन.के. चड्ढा जी, हम उनके प्रति भी धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। प्रोफेसर वंश गोपाल जी, जो वाइस चांसलर सुंदर लाल शर्मा ओपन यूनिवर्सिटी के हैं, हम उनके प्रति भी धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। डॉक्टर तुषारिका मुखर्जी, जो फ्रॉम जर्मनी, उनका भी बहुत ही अच्छा लेक्चर रहा है। हम मनोविज्ञान विभाग की तरफ से उनके प्रति भी धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। हम धन्यवाद ज्ञापित करते हैं प्रोफेसर पी.के. खत्री फ्रॉम लखनऊ, उनका भी विचार बहुत ही अच्छा रहा, जिससे हम सारे लोग लाभान्वित हुए हैं। मनोविज्ञान विभाग की तरफ से उनके प्रति भी हम धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। हम धन्यवाद ज्ञापित करना चाहते हैं डॉक्टर मुस्तफा जरीन, जो ईरान से बिलोंग करते हैं, एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं। हम मनोविज्ञान विभाग की तरफ से उनके प्रति धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। साथ ही साथ हम धन्यवाद ज्ञापित करना चाहते हैं जितने भी प्रतिभागी पार्टिसिपेंट कनेक्ट हुए हैं मनोविज्ञान विभाग की तरफ से, हम उनके प्रति भी धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। साथ ही साथ अपने विभाग के पूर्व विभागाध्यक्ष की श्रेणी में प्रोफेसर एलियन सिंह, प्रोफेसर आनंद कुमार, प्रोफेसर गायत्री जी, प्रोफेसर एसन उपाध्याय के प्रति भी हम धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि आप लोगों का सहयोग मनोविज्ञान विभाग को हमेशा मिलता रहा है। इसके लिए हम मनोविज्ञान विभाग के